Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. And I hope काफी अच्छा वीक चल रहा है आप लोग का because there is a lot of news. फुटबॉल में कभी भी it's not a dull day. Trust me on that. मैं सोचा यार एक दिन रेस्ट मिल जाए यहाँ पर फुटबॉलिंग न्यूज में क्या करें मैं सोच रहा था what video should I do about or then boom we got Haaland in. So yes, speak about, of course, Haaland and a lot more because game है आज रात को लिवरपूल के लिए तो I think it's probably the most crucial night in recent years. You can almost say that, right? And every night is I know. लेकिन welcome back Uday from Loudmouth Football. Uday after the last game and of course the transfer news जो चल रहा है contract situation जो हम बात करने वाले हैं. No, जी. How's it been last 48 hours? Uh, Last 48 hours have been very crucial, I think, to every Premier League club because I think Man City just want to increase their point gap by 2030 easily. They signed this great striker, Haaland, who might just hit the ground running as soon as he's uh, onto the Premier League scene. तो देखते हैं अभी प्लस लिवरपूल के लिए तो थोड़ा खतरे वाला सीन है. League is getting out of hand. We have created a 3-point gap. The goal difference is the issue. The points is not the issue. I think City game हार भी सकती है, but at the moment it looks very dicey for them to win the league, irrespective of them winning all matches. तो ये बात है. चलो फिर बात करेंगे इन डिटेल एज वेल मतलब काफी सारे सब प्लॉट्स हैं यहाँ पर बाय द वे इट्स जस्ट नॉट एस्टन विला लिवरपूल लीड्स चेल्सी बहुत ही बड़ी राइवलरी एंड वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स एवर्टन they might just get the escape of the decade and half, right? As in that's the scene. और हाँ नॉर्थ लंदन derby भी है उसके लिए maybe we'll do a live tomorrow but we'll briefly speak about that as well. लेकिन हाँ like Rahul says big up to Rahul, bang bang Sai और जो भी join किया है again get in the comments आपके भी views बोलो. हाँ we did reaction videos on our own channels about Haaland, about the transfer window in general. उदय ने किया है, do check out Loudmouth Football, मैंने किया है और काफी लोगों ने कमेंट किया है लेकिन now that you know almost 24 hours have passed since that news of that tweet of Fabrizio Romano, मैं यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन डिटेल लेना चाहूंगा यार. बहुत सारे मिक्स्ड रिस्पांस आ रहे हैं एंड आई एम सरप्राइज. आई नो लॉट ऑफ पीपल बोल रहे हैं यार इट्स एंड गेम. मैंने खुद बोला है अपने वीडियो में एंड दैट इज व्हाट आई हैव काइंड ऑफ नेम्ड द थंबनेल एज वेल. लेकिन the fact that Haaland ka recently there is an injury record that one needs to be careful about because he is basically becoming a man technically speaking, right? So there is an injury record and of course वो EPL पे नहीं किया है with the Germans coming to England. हमें पता है Timo Werner or the likes. So where are you on all that? मतलब as an opposition fan are you like no Haaland is the end game for Premier League और आपको लगता है नहीं it's easier said than done. We've had a lot of superstars come, you know. आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक प्लेयर की वजह से द फोकस हैज शिफ्टेड ऑन वन क्लब एंटायरली. मतलब we have to see this once he gets into the scene. Right now I don't think we should be making a speculation कि भाई आते ही he'll hit the ground running. He might, you never know, but it'll be a heartbreak for all Premier League clubs then. अगर सिटी हर एक मैच जीतने लग गई यहाँ से 3-4 गोल पड़ रहे हैं हर एक मैच में फिर तो कॉमेडी सर्कस बन जाएगा. बट इरिस्पेक्टिव आपने उसकी इंजरीज की बात की है तो दिक्कत की बात तो बहुत है. 1920 2021 21 22 छोटी छोटी इंजरीज, नी इंजरी सस्टेन की उसने बहुत. उसमें उसने 24-25 लीग गेम्स छोड़ी हुई हैं. मतलब ही इज नॉट प्लेड इन दोस गेम्स. सो दैट इज अ मैसिव ब्लो टू एनी क्लब एंड आई थिंक ही इज इंजरी प्रोन. लेट्स फेस इट. सो आई थिंक लेट्स होप कि फिटनेस रेजीम वगैरह ठीक रहे एंड ही डजंट सस्टेन एनी इंजरी बिकॉज वॉचिंग अ सेंसेशनल प्लेयर लाइक हिम is very attractive to the eyeballs. So I think that's what it is. Yeah, matlab, bang bang is like breaking news. Haaland have just retired from winning UCL at the age of 21. Yeah, come on. मतलब वही है मतलब it's easier said than done. I believe that. मतलब I still remember like मेरा मतलब I was a huge Shevchenko fan, Kaká fan. और Shevchenko जब आया था, I know it was not exactly at the real prime of his career, लेकिन it was like a season after that, simply put, right? As in तो मुझे लगा था नहीं we will basically do it, you know, that's the big deal. और we won, the Galacticos बन रहे थे हम in the English Premier League, लेकिन उसने नहीं किया. Drogba proved it and maybe in a strange way City का squad, yeah, it'll still be better because competition लाएगा. I don't know, interesting रहेगा. What about Gabriel Jesus? और हम I know towards the summer we will be talking.
But again, close to 20 people watching. I think हम certainly double कर सकते हैं number. Let's like the stream. For sure. अगर आप like करिएगा तो अपने आप YouTube algorithm उनको suggest करेगा, तो hopefully they will come on and obviously put in their thoughts about Haaland, about other transfers, Liverpool के transfers, Chelsea के transfers हम बात करने वाले हैं, और काफी other clubs, right? So let's like the stream, everyone. It certainly helps, and do check out the channels in the link in the description below. But yeah, it's exciting to see what Haaland might bring to the table. You never know, really, these days, big money moves. Recently, in my eye, none of them worked. Grealish, Lukaku, Sancho, Luka Jovic, Hazard, Sabi Kochel, you have a point. लेकिन वही है, City will say it's high time कि एक big money move worked. Yeah. और Luis Diaz, man, Luis Diaz is the prime example. यहाँ पर बैठा है अपना उदय, and Luis Diaz, he is a big money signing. He's not like एकदम cheap नहीं. He's not that big money signing, but in जैसे तो नहीं है. मतलब ये तो बहुत ही मेरे भाई overvalued, hyped up players है सब. इतनी hype, players को गिरा ही देती है eventually. मैंने देखा है. आप देखो Di Maria. मैं तो यार थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है. ये बहुत बार सुना हूं मैं. उदय, nothing about you here. It's about Liverpool fans. मैं जनरलाइज कर रहा हूं for once. Luis Diaz Liverpool spend. सादिक भाई ने एक्चुअली एक प्रॉपर डेटा शेयर किया था मेरे साथ. Let's get honest, boss. As in, you cannot win the league without spending. Luis Diaz पर आपने स्पेंड किया है. हाँ, वो अगर टॉटनहम में कम नहीं करती ना वैल्यू, फिर भी आप स्पेंड करते. Let's be honest about it. ठीक है, तो बट ये अमाउंट एक बात बताओ, कितना अमाउंट होता है वो? कुछ that is meagerly not even half of what they spent on Lukaku. Okay. उससे भी कम है. Haaland is 60 million euros as per Fabrizio Romano's tweet. ठीक है, हाँ, Luis Diaz is more than that. अरे नहीं, Luis Diaz is not more than that. What are you talking about? अरे वो 50 million pounds था ना, if I'm not wrong. मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट Again, फिगर. chat, correct, यहाँ पर तो पहली लड़ाई हो रही है. नहीं, लड़ाई नहीं हो रही. It's just fun banter, everyone. Mbappe to Madrid, latest transfer news. Yes, Ayush, तो Mbappe as things stand, he has been spotted in Madrid. और वो एक्चुअली सच है, बट वो पता नहीं यार, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन है, तो मे बी यार वो मैड्रिड गया होगा ऐसे. आई डोंट नो. हो सकता है कि हकीमी जो मैड्रिड में था, आई थिंक फॉर अ सर्टेन पीरियड, he wanted to go and that's why he just accompanied Hakimi. वो भी हो सकता है. So lot of permutations. मैं आपको काटूंगा बीच में. 50 million plus 17 and वो हुआ है बोनस, तो हाँ 67 के आसपास दिए हमने टोटलिटी में. ज्यादा है मतलब. बट 67 ठीक है यार उसके लिए. मतलब 60 मान लूंगा, चलो 60 मान लो, 50 मान लो, 50 ठीक है ट्रांसफर फी उसके लिए. ओके, सो यार अगेन वी नॉट इन 2012 की टॉरेस से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मतलब आई नो 50, आई थिंक एनीथिंग नॉर्थ ऑफ 60 मिलियन इज लाइक डेफिनेटली यार आप पे कर रहे हो प्रॉपर. तो आप यू कैन नॉट डिनाई, बट आई गेट योर पॉइंट. एग्जैक्टली. लेट्स मूव ऑन. आई डोंट थिंक लेट्स एग्री टू दिस. Bro, if Newcastle is ready to pay 30 million for Chris Wood, I think 50 million तो किसी अच्छे प्लेयर को मिलने चाहिए. Fair enough. वो ही है ना, मतलब the market is spoiled. Congratulations Haaland for becoming the UCL runner-up next year. Well, even after the inclusion of Haaland, we still can't win UCL. We are not made for this trophy. Nitesh बोल रहे. हाँ, मतलब again it's easier said than done, Nitesh. मतलब it is easy to kind of pinpoint कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. UCL is a luck factor. हम देखे थे यार in late 2000s, right? We really struggled as a Chelsea team, right? मतलब in terms of getting over the line. तो मतलब luck factor काफी होता है उसमें. तो you cannot go there. हाँ, but again Pep 6 bar, I think he's been given a shock, so I don't know. Hello both, can you help logic? The Man City should thank Spurs for getting Haaland. What kind of sense was it to go for Kane when Haaland was available? Were they okay? Actually यार ये सब का स्टोरी है ना Chelsea. मैंने actually kind of rant किया Matata United. I don't know if you guys have seen it, and that is about Chelsea. Entire summer, last summer we were like bang जाओ. तो I think Dortmund ने क्या किया है भाई? Dortmund ने क्या किया है? For me, I am surprised with that. एक साल में क्या ही तो उन्होंने जीत लिया है with Haaland. I don't know. मतलब again hindsight is a beautiful thing, but I am disappointed as a Chelsea fan. We have got the raw deal, like Spurs got in Luis Diaz, right? What do you think? Okay, what do you think? Does Hazard has a big transfer left in him? Well, GOD Gaming, I certainly think कि Hazard के पास है एक और move. अगर वो खुद चाहता है move करने के लिए, it has to come from him. But again, is it going to be a big move जहाँ पर वो एक crucial player होगा? Time will tell. हम बहुत early बोले थे, talking about Aston Villa जिसकी बात करने वाले हैं. Philippe Coutinho, right? Philippe Coutinho was one definitely जो एक दिखाया first 3-4 मैच में, wow. Last मैच में भाई bench किया गया था. That is last 2-3 मैच में Aston Villa अच्छा नहीं कर रही थी. Then they benched him, and then अभी they changed the formation. So you can never say it's easy for someone to come back strong.
But again, it's all in his mind. I think वो है उसमें, he can play a different role. Maybe not that kind of firepower that he had earlier. शुरू Absolutely. में आया 4 गोल 3 असिस्ट मारे, उसके बाद वो थोड़ा ठस ही रहा है, मतलब थोड़ा he's been very वो hot तो and मतलब cold. I was expecting it, to be honest, and it's same with Yeah. Gerrard as a coach, right? Yeah. Just while a big up as well. Will Haaland be able to perform better against teams with low blocks? He's a goal poacher, but breaking defensive lines will be difficult, and that too given the physicality. So, the Bianchu, I actually feel that he will be able to. Firstly, he's 21. Remember, आप भूल जाते हैं. He is 21. ठीक है, so he has a ceiling even higher potentially. Again, he can go lower as well, like we have seen with certain players. And first of all, Callum Hudson-Odoi comes to mind for some reason. But anyway, going with that, I think he is a left footer. Firstly, if you see Bundesliga games when he was in his prime with Jadon Sancho, they used to interchange a lot. बहुत, especially लॉकडाउन के पीरियड में मैं काफी क्लोजली देखा था कि he is also someone who creates. ठीक है, तो you cannot say that he is only a goal poacher. He can do much more, and like a Kane, maybe if he kind of develops certain areas, maybe he'll get there. And Pep is probably the ideal coach. Uday, आप बोलोगे? Obviously, I think he's both Harry Kane and even Haaland for that matter. I think they're ideal poachers. Haaland का तो रिकॉर्ड ही अलग है, चैंपियंस लीग में ज्यादा गोल मारे उसने जितने appearances हैं, and even in the league matches, and overall 111 goals out of 90 games, or sorry 90 goals out of 111 games. So I think he's done a very impeccable job. कोई भी नहीं कर पाया आज तक इतना. तो देखते हैं प्रीमियर लीग में क्या कमाल दिखाता है. बट अगेन उसमें ये बात है कि वो बहुत एजाइल है, मतलब स्पेस बना लेता है, वो लो ब्लॉक में भी स्पेस बना लेता है, और शॉट पावर तो अलग ही है माशाल्लाह उसकी. जो बॉक्स के बाहर अगर रहेगा बंदा, तो बॉक्स के बाहर से ही वो उसकी शॉट पावर बहुत, ही इज अ प्रॉपर ट्रेडिशनल का मॉडर्न स्ट्राइकर. He's a hybrid striker. He's not someone who can, who struggles shooting from a distance. आजकल के स्ट्राइकर्स को बहुत दिक्कत आती है बोलने में. If Klopp got his eye on someone, he will get no matter in what you want to be forgive. मैं स्माइल करता हूँ क्योंकि मतलब I kind of get there, but savvy coacher, like hats off to your definitely the love that you have. But trust me, man, this is not real. As in, obviously, there is a kind of pride there. I understand. लेकिन यार Nabil Fakir ने मना किया था, I guess, if I'm not wrong. I think it was probably his medical issues also at the time. कुछ problems, yeah, medical problems. But again, like Klopp is not someone who really wants a lot of say big names. So that is going to be interesting what you guys go for, because I will certainly be talking on that as well. Michael talks football in the house as well. Everyone jealous of City. Of course, this is a great transfer for them, but gonna be super interesting to see how he adapts to Pep's system, because Haaland is used to counter-attack open space football. Absolutely, Michael. But again, he can kind of even be that a person who kind of holds up and gets other people into play. Okay, so there are two ways, that you can look at it. I feel that it's a great addition as long as he can just adapt to England in general, which I believe the personality is he probably should. He probably in a strange way he reminds me of Costa plus Drogba. I don't know if that makes sense. Again, time will tell whether he is there, but he kind of reminds me of those two. क्योंकि हाँ antics भी है, at the same time वो natural element है. But I have to be honest, जिसने इतने गोल मारे हैं ना, the defense has looked very fragile and open, to be honest. अगर आप देखोगे goal scoring, even if you watch any videos on YouTube, you will see the defenses have been opened. It's not like the Premier League defense. Premier League defense is very different from what he has faced. So let's see what happens. I think low block against he might struggle. You never know. Let's see. Yeah. Absolutely. By the way, here we'll come to this, Ayush, on the other clubs as well. लेकिन absolutely Sadiq भाई याद दिलाते हुए of the report that he probably shared with me in the past, that Liverpool they've also spent, and I'll be real, we have spent, United has spent, everyone has spent, but I think it's not about spending, it's about which team kind of gets the right fit, or City and Liverpool have proven that, right? And that's the more important part. Absolutely. This will be interesting. City Hub, if it's true. And again, we will come to a lot other questions, people. Chomini as well. I'm kind of starting a lot of names, lot of questions here. To देखते what we can discuss in time, but certainly we'll come back to them. People forgetting Man City can now put crosses for Haaland. We all know how good Cancelo is giving those balls to the beast. Yeah, absolutely. And a lot of comments यहाँ पर आ रहे हैं Coutinho पर, interesting, और Coutinho की बात tactically भी बात करेंगे. Sunil Chhetri for Chelsea. Well, that kind of makes sense by the way. But again, people, almost 30 people watching. Like the stream, algorithm kind of suggests हम आराम से double कर सकते हैं. It is basically a stream which will cover a lot of transfers and a lot of matches.
Anonymous member in the house, good to see you back as well. Absolutely, bhai. Always good to see you. Haaland ka true style is that of a young R9 or Samuel Eto'o, just 4 to 6 inches taller. Interesting comparison. Yeah, and we'll come to Chelsea. Just stick around for the Chelsea talks as well, and people. Hopefully, you'll get Chelsea fans by then. पहले यार, let's move on to the first game that we're talking about is obviously Aston Villa Liverpool. आज रात को ही है. Flashbacks of 7-2. I know that Ollie Watkins tha and he's still there around, but Ross Barkley tha us team mein. So what about that memories, man? As in, come on, surely that's got to That be the was team insane. talk. Even though we lost the match 7-2, but that first half was still relentless for Liverpool. हमने तब भी प्रेस किया था काफी, but nonetheless एक आधी गेम होती है और वैसे हमारे पास उसके बाद कोई गेम आई नहीं है जिसमें हमारे बहुत ही we faced a heavy loss, and the season is a testament to my statement. So बाकी देखो, लास्ट टाइम हमने उनको 1-0 हरा दिया था. Even though their performances are good, no doubt. Gerrard is a good manager, but he can't take the results out that often. पिछले 2 गेम भी जीते हैं वो, तो अभी जेरार्ड ठीक है, ठीक ठाक है, हॉट एंड कोल्ड है. So let's see how he performs against Liverpool. We are going to their stadium, so I think it'll be a game to watch. But to be honest, teams like Crystal Palace and Aston Villa have always made it very tough for Liverpool. So I'm expecting maybe Emi Buendia and even Oli Watkins and again a hot and cold Danny Ings this season to maybe come up with some creative spark. I mean, Emi Buendia is a brilliant footballer. So I think देखते हैं कैसे क्या बनाएंगे वो. ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा चांस है एस्टन विला कि लिवरपूल को जीतना ही है ये मैच. मेरे हिसाब से तो लिवरपूल आराम से जीत जाएगी ये गेम. Last game, look, I already predicted कि Spurs might win it, but because I'm sure of this game, I think we should win it easily. So let's actually take a quick look, at the table. So abhi yaar, if I'm not wrong, again, technically, I think you definitely need to win all the matches, right? But again, things can change any time in the Premier League, as we know. So 86 points versus 83 points है Man City Liverpool, and as you said, Aston Villa का मतलब इतना motivation नहीं होना चाहिए by the table, just going with that 43, और वो safe है, they're pretty safe अभी, don't to worry about it. लेकिन I think if I'm not wrong, Aston Villa are going to play Man City the last game of the season, ठीक है? तो वहाँ पर talk about charity, I think यहाँ पर किसी ने बोला है कि जेरार्ड बिक गया है, तो I don't know man, मतलब आपने actually विला को, you said last time to beat them, I think it's 3 consecutive times that you've beaten them, ठीक है? तो ऐसे charity आप बोल नहीं सकोगे, plus you really need to win this game. At the same time, Aston Villa, they have just come to form, and some of their players might just be looking for a move, or they might be playing for moves as well. I don't know. Coutinho to Villa, do you see that is something that उन्हें करना चाहिए long term? Again, Barca fans in the house, आप बोलिए, do you want to see Coutinho back at Barca, or he's going to be at Villa? नहीं, Aston Villa is trying to tie him down for a permanent contract. So I think वो कर लेंगे. This season they have to tie him down for a contract. Gerrard wants him. Plus, I think we haven't spoken about the fullbacks. Matty Cash and Matt Targets are someone who have actually elevated their play wide. They are able to stretch teams out pretty wide. So I think ये इनका game देखना मजा आएगा. Salah versus Matt Target, or Mane and Diaz versus Matty Cash. I love the way these fullbacks play, to be honest. So they're good attacking fullbacks and very balanced. बाकी कौनसा और मिंग्स हैं पीछे डिफेंस में, तो देखते हैं वो भी कैसे नेगेट करेंगे लिवरपूल का अटैक. हाँ मतलब वही है, मतलब and we'll talk about injuries as well, but again people do like the stream, hopefully you can share the stream भी, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो we'll have more interactions, and I am going to take all the questions, so don't worry about that. Gerrard going to do what he was used to, taking Liverpool away from the title. That is a 1.5 नितेश भाई. लेकिन यार मैं actually यहाँ बोलूँगा quickly यार, मतलब honestly बोलूँ तो surely 2013-14 memory में रहेगी. Whether you say he's a professional, he's Aston Villa manager, how do you feel about it? Honestly speaking, like he hasn't won a title, right? And that 2013-14, वही था समय जब again Chelsea came, and then Crystal Palace came, और वो 2 matches kind of changed it, and you guys couldn't win the title. Well, that was the reality of it, those 2 matches. So now being that guy potentially to stop Liverpool kind of winning, I know favorites नहीं है अभी because of what happened over the weekend. लेकिन how would you feel about it, honestly speaking? What do you think? मैं आपको एक बात बताता हूँ. देखो, अगर जेरार्ड ने 2-3 लीग टाइटल जीत ली होती ना, तो लोग फिर ये भी बोलने लग जाते कि are you serious if you're comparing Frank Lampard to Steven Gerrard? If Gerrard had more titles, he would be ranked and rated more than Frank Lampard. Like
दैट्स माय जस्ट माय ओपिनियन. अगर मेरा बायस आ रहा है तो आए, बट ये मैंने कहीं पढ़ा था, काफी पंडित से बोलते हैं कि जेरार्ड को अगर टाइटल्स होते, ही वाज अ वेल राउंडेड ओवरऑल देखा जाए फुटबॉलर, ही वाज मोर वेल राउंडेड देन फ्रैंक लैम्पार्ड वाज. तो आई थिंक दैट इज डिबेटेबल फॉर एनी डे. आई थिंक मजा भी आएगा अगर हम टेक्निकली डिबेट कर लें थोड़ी, बट आपका क्या कहना है? आपका क्या नहीं कहना है? मतलब वही है, मतलब इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग ना, बहुत ही डिफिकल्ट. फ्रैंक लैम्पार्ड सेलिब्रेटेड, नो, एवर्टन जब जीती है, मतलब दैट वाज अ शॉक, बट अगेन वो नेचुरल रिएक्शन आता है. जेरार्ड he's always been a winner, he's always been a fighter. वो एक something that I always respected him. And by the way, shout out यहाँ quickly to David Talks Football, क्योंकि हमने actually, you know, with Menace and Mong, we did a very interesting video, so big shout out है वहाँ पर. और again, people watching do like the stream, and one main reason to like the stream, I have to say that today is my mom's birthday. Everyone out there, so अगर आप लोग wish कर लो on the chat, it will be you know, it'll just make her day. So hopefully we can get that, because I think I couldn't make her day, so hopefully you guys can, if you can just wish my mom on my behalf or on your behalf, absolutely fantastic. And there is some other news which I'll come to towards the end of the stream. But absolutely, you know, this is going to be interesting how Gerrard takes it. एक controversial point definitely उदय भाई यहाँ पर थोड़ा सा, I don't know, again maybe controversy की नहीं, press conference सुना मैंने, ठीक है, टुकल का, and एक question आया था. First question was like, Liverpool are playing on Tuesday night, Chelsea are playing on Wednesday night, और FA कप फाइनल है सैटरडे को. और ये मतलब टाइम एंड अगेन शेड्यूलिंग की बात हम कर चुके. लिवरपूल गॉट अ रॉडी, लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग. आपको भी, यू नो, डिफिकल्ट फिक्चर मिले थे, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा इजी मिलते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश FA कप फाइनल, आप दोनों ही टीम्स को पता है, व्हाई कांट द प्रीमियर लीग चेंज इट? मतलब व्हाई दैट अनफेयर एडवांटेज? ऐसा नहीं कि यार, यू नो, लिवरपूल आर ट्रैवलिंग टू स्टैमफोर्ड ब्रिज, बोथ द टीम्स आर प्लेइंग इन वेम्बली, so it is certainly an advantage Liverpool, don't you think so? Like, to be honest, I think it's 50-50. I'll tell you why. It is a disadvantage to Chelsea, but it is an advantage also because you guys haven't played European football in the last 2 weeks, I think, right? तो एक तरह से आपने गेम्स कम भी खेली हैं, तो और बात की जाए तो हाँ, ऑब्वियसली एक दिन का गैप है, तो वो तो रहेगा. Maybe they could have shifted the game by a day or so. They should have done that. But yeah, I think that is maybe an unfair advantage to Liverpool. And I hope Chelsea don't really give in terms of fatigue, क्योंकि फाइनल में तभी मजा आता है जब दोनों टीम्स जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएं. Yeah, So I think that is something that we should be. मतलब I'll be honest with that, Uday, it is an advantage Liverpool. So Tuchel couldn't say it because of obvious reasons, नहीं तो वो थोड़ा, you know, ban हो जाता, the way Mourinho did. And talking about Mourinho, we had a mention of him. लेकिन it is unfair advantage. There's no two ways about it. It's an FA Cup final. It's basically, I know Liverpool are fighting for the treble and whatnot, quadruple possibly अभी भी. लेकिन यार, for us it is the only match left of real consequence, and they have disrespected us. We have been in 5 finals out of the last 6 finals. Like, this is something that, you know, they need to know that, you know, Chelsea Football Club has been disrespected. I will be, you know, putting my neck out and saying that we have been disrespected yet again. I will not sit on the fence there, absolutely. And again, nothing against any Liverpool fan here or Liverpool as a club. It is the Premier League and the FA. They are having an issue there, or वो है यार soft bias, whether we agree or not. GOAT English midfielder, Jasti Lingard, exactly, has felt daggers in his heart. He just couldn't say it. That's why वो आ गया वापस लास्ट 2 मिनट में आपने सुनाई. और yes, absolutely, happy birthday Ankit's mom. Thank you everyone, and I'm pretty sure that she is happy as well to see these messages. Thank you, really means a lot to everyone. Nitesh, Admiral. Oh, by the way, आपने पूछा था, right? Is there any particular, I think, podcast on Spotify? So hopefully we'll be there, yeah, in coming days, and certainly I'm pretty sure Uday is probably going on the same. I don't know, Uday, आप already हो Spotify पे? मैं हूँ, बट मैंने बंद कर दिया. मैंने पहले शुरुआत ऑडियो पॉडकास्ट से ही की थी, तो अब सुन सकते हो अगर आपको सुनना है. लाउड माउथ करेंगे मतलब हमको मतलब सबको इंडियन कम्युनिटी, लाइक बेसिकली वी आर जस्ट स्टिल बिल्डिंग द कम्युनिटी, एंड एज द न्यू सीजन स्टार्ट्स आप बहुत सारा चीज देखोगे. मतलब इस समर वी आर गोइंग टू प्लान एंड कम अप, यू नो, न्यू कंटेंट फॉर यू ऑल. एब्सोल्युटली. चौमनी लिवरपूल ट्रांसफर को चांसेस, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए. मैंने सोचा था ट्रांसफर्स थोड़ा सा, यू नो, बीच में करेंगे बात, यू नो, जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द मैच अ बिट. तो चौमनी तो रियल मैड्रिड हो रहा है, चौमनी टू, यू नो, एज इन लिवरपूल हो रहा है. एंड अगेन मैंने कवर किया था अपने वीडियो में, मैं तो बोल रहा था यार, वी आर बेसिकली, यू नो, आई डोंट नो, लिवरपूल गेटिंग अ चौमनी, सिटी गेटिंग अ हालैंड, मतलब क्या ही तो बाकी है मतलब फुटबॉल में, यू नो, दैट्स व्हाट आई रिएक्टेड.
क्योंकि yes, you can say कि लिवरपूल हाँ they are having maybe Fabinho, Henderson maximum 1-2 साल और खेलेंगे at the very prime, right? At the same time, Keita has done well this season. He has come much better than last season. Or I think you had, of course, you have people who are coming back from injury. Elliot, Curtis Jones, यार, he is not to be seen. क्या हो गया उसको sudden से? कर्टिस जोन्स का बड़ा हॉट एंड फॉर्म चल रहा है फॉर्म, बट उसको हैमस्ट्रिंग इश्यूज भी हुए थे पिछले काफी मैचेस में, तो अभी वो थोड़ा ठंडा चल रहा है. आई थिंक ट्रेनिंग में इतनी पीक परफॉर्मेंस नहीं आ रही जितनी एक्सपेक्टेड थी पहले. लास्ट सीजन काफी अच्छा एज अ सुपर सब ही वाज परफॉर्मिंग गुड इंपैक्टफुल, गिविंग अ गुड इंपैक्टफुल गेम, बट नाउ इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. बाकी हावी एलियट इज अ वेरी क्रिएटिव फुटबॉलर, लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम. हिज ड्रिबलिंग स्किल्स, ट्रिकरी इज अमेजिंग. बहुत कॉन्फिडेंट है बॉल पे. मजा आएगा हावी एलियट को देखते प्रीमियर लीग में फिर से. Exactly. तो मैं वही सोच रहा था ना, हार्वी एलियट might be turned into a proper winger जो capable है. In fact, he's kind of played both the roles, right? As a youngster. और यहाँ पर great comment हिमशिखर, and absolutely right. उदय शेट्टी याद आ गया, मतलब कंट्रोल क्या कांदे ले लो अब शुरू हो जाएगा. Absolutely मस्त है, लेकिन yes absolutely भाई, मटाटा यूनाइटेड चेल्सी थ्रू एंड थ्रू. पोल में हालैंड की डील छोड़कर डील नहीं होगी मुझे लगता है. एग्जैक्टली मतलब अगेन देखते हैं, मतलब आई स्टिल फील अभी टाइम है. एनीथिंग कैन बी डन. ट्रांसफर विंडो, स्पेशली दिस विंडो, अब कोविड टाइम्स आर लिटिल बेटर. क्लब्स के पास पैसे है, तो आई वुड से दैट मोर ट्रांसफर्स पॉसिबल है. रिफात खान भाई, चौमनी लिवरपूल ट्रांसफर का बता दो एक बार प्लीज. लाइक अगेन क्या परसेंटेज दोगे यार, मतलब कंसिडरिंग जो है आपकी स्क्वाड ऑलरेडी, what would you rate this transfer as? I have actually given this I would transfer actually think he will elevate our midfield a lot. हमें एक बैलेंस चाहिए मिडफील्ड में. आजकल ये प्रॉब्लम भी आ रही है लिवरपूल में कि वी आर नॉट एबल टू सस्टेन द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इवन इफ वी आर बीइंग हिट ऑन अ काउंटर, एक जो काउंटर प्रेस हम बनाते हैं थियागो और फबिनो से, बहुत स्लो है वो. मुझे लगता है हेंडरसन, केटा बहुत उनसे ज्यादा फास्ट है, तो आई थिंक चोमेनी विल हेल्प अस इन दैट बिकॉज हिज अवेयरनेस इज मच 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 not I'll not say better, but he's quick off the ball as well. So I think Thiago, anyways, we knew he'll be slow in retrieving the ball. So that is where हम मार खा जाते हैं. But I think हाँ, क्रिएटिविटी के मामले में no, we are world class. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है Thiago से इतनी. But हाँ, हमें we need some influx in terms of Chouameni coming in will be a definitely a massive addition. I think Keita अभी कुछ लास्ट 2-3 मैच में वैसे भी हॉट एंड गोल्ड चल रहा है फिर से. मतलब काफी गेम हमने विलारियल वाली गेम उसी वजह से हमने पिटे हैं फर्स्ट हाफ में, टू बी ऑनेस्ट. सो मेनी बैड टचेस. So I think yes, Saeed Abrar is like a proper Liverpool fan. I have to say, मतलब this is what the spirit, मतलब है यार, spirit of Liverpool. I have to say it. वो exists very much. मतलब नहीं आ रही. मतलब बोल नहीं सकते यार, मतलब अगेन 5-0 था, मतलब धो डाली थी न्यूकासल जो इनफॉर्म टीम थी. So you can say that okay, after that you won't expect that, but again Gerard Solo मैं बोलूँगा again just say it is so stupid. हाँ It is so stupid. न्यूकासल के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी भी पहले कन्वर्ट करने के लिए. क्रिस वुड ने इतना सॉफ्ट हेडर मारा पहले, और अल्मिरॉन भी मतलब अलग ही मतलब अपनी डायल दिखा रहा है फोन फुटबॉल पिच पे. थोड़ी ना, I think they should have. I think they were a little casual also. Newcastle, they didn't look like very sharp on their day. So I think. Yeah. Sadik bhai has a great point यहाँ पर, इसलिए मैं actually अपने मतलब I don't know people, if you watch the latest transfers, kind of series we have, so I am going to be rating the transfers throughout the summer. So मतलब I have given this transfer as mighty, as in this is going to be a mighty transfer. About Chouameni to Liverpool अगर हो जाता है ना, that is going to be overpowering more than Haaland to City. Having watched him play this season, he settles the midfield control issues that Liverpool has had. मतलब I again relate exactly, मतलब I don't know people back in the day have watched. Sadik bhai, I'm pretty sure you have. John Obi Mikel जो आया था ना नया, he could play with the ball as well as Jose Mourinho turned into that person एक rock. So वो एक difference था. He could do a bit of both. I know मतलब not the quality of Makelele and different player altogether, लेकिन उसका ceiling Chouameni is even higher. So he can also get you the goals also. मतलब for me this is going to be the next big thing in world football, Chouameni, and वो एक Chelsea ने किया है. But again talking about this, Uday, do you think we need to buy one more centre back this end of season? No, we don't need to. I think Joe Gomez is also doing a great job at the right back position. उसको वापस सेंटर बैक पोजीशन में खिलाना चाहिए थोड़े मैचेस के लिए. ट्रेनिंग में डिपेंड करता है कैसे खिलाते हैं. बाकी है माटीप है, we have got BVD, Konate. I think our centre half is fully booked and slotted for the season. I don't think we need another centre half.
Yeah, and by the way, again, over 40 people watching. Hopefully, everyone has liked the stream. और just so you know, हम transfers discuss करने वाले हैं certainly. लेकिन हाँ, it's about Arsenal and Liverpool for the time being. We will be discussing other games as well जो होने वाले हैं इस midweek. So stick around. Definitely हम काफी सारा चर्चा करने वाले हैं. Chelsea fans, Arsenal fans, and Man City fans as well certainly. And we'll take a lot of predictions from you also. Get in your predictions as much as possible अभी भी. लेकिन हाँ, talking about transfers, थोड़ा contracts की बात कर लेते हैं. 1 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट पढ़ा है. There has been issues when it comes to Sadio Mane and his contract talks. हाँ, end of the season again the contract talks are going to happen. Similar thing with Salah बोलोगे. So now the fact that Sadio Mane and Salah दोनों ही contract issues में है, just like Chelsea का था in defense, we had 3 people there, remember? तो वो दिख रहा था on the pitch. So considering that, ये last जो है 2-3 हफ्ते weeks का काफी kind of important week है, right, for you. Would you actually take a gamble and start both of them? Yeah, I think that goes without saying. Irrespective of whatever contractual problems are there, हो जाएंगे इस वॉट यार. माने एंड साला को जाने नहीं देंगे इतनी आसान से. आई थिंक स्पेशली अब क्लॉप ने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक क्लॉप इज रनिंग द क्लब फॉर द मोमेंट. FSG have actually given him the autocratic right of having that demand from the players. तो ठीक हो जाएगा ये इशू. इतनी बड़ी बात लग नहीं रही. बाकी बायर्न वगैरह सॉफ्ट डील वगैरह, स्काई स्पोर्ट्स लव putting posters of superstars. So I think this is just another one of those fluke deals that are being. It is just going to be raw. कुछ इतना substance नहीं है इसमें. कोई जान नहीं है इस बात में. तो गनाबरी क्यों आएगा भाई सॉफ्ट डील में? गनाबरी और माने का लेवल लग गया. गनाबरी is so injury prone. गनाबरी की परफॉर्मेंस भी इतनी, मतलब he's a great addition to Bayern Munich, but he's on and off also sometimes. Even when they were in the semi-finals last year, गनाबरी तब भी इंजर्ड था. तब पेरिसिच खेल रहा था लोन पे उनके लिए. तो हॉट एंड कोल्ड है वो. कोई इतना खास नहीं लगता मुझे गनाबरी. We are back where you hate we move. That's the spirit, bro. Definitely. लेकिन हाँ, I have a different opinion यहाँ पर. मुझे लगता है कि there is some substance to it. तो मतलब मुझे genuinely लगता है क्योंकि the fact that Luis Diaz has impressed so much. मतलब मेरे ख्याल से लिवरपूल ने भी expect नहीं किया था कि this guy will come up from so much. And Jota has been a finisher. So for me, Jota can be your number 9. Luis Diaz can be your winger, and Salah is anyway going to be. Salah रहेगा. और मुझे again, it's just my gut feeling जो बोलते हैं ना. Lewandowski to Barca is the thing. वो probably in the last 24 hours लग रहा है कि there is basically substance to that, and उनका number 9 position will be kind of vacant by Munich का, and Muller at his age probably he can play that with Sadio Mane kind of being the winger or being up front rotating. मतलब there is a possibility. I'm just saying, putting it out there. Domino effect are a thing in football. इस summer में देखना there will be domino effect. होता नहीं इतना, लेकिन इस बार certainly मुझे लगता है. But again, 45 watching, yes. Please like the stream, everyone. जैसे मैंने बोलता यार, it is just a press of a button, nothing more. And do check out Loudmouth Football भी काफी अच्छा content है. Rene, I am good. Thank you for joining, and we'll be talking about Leicester as well quickly for sure. Ankit Bhaiya, your opinion? Which young centre back will replace Matt? So we will come to the Chelsea transfer talks and the Chelsea match as well. क्योंकि काफी discussion करना है, तो मैंने start कर दिया है वो particular question. Absolutely. Are you jealous? यार जेलस की बात तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसी मतलब अगर जस्ट बाय नेम्स इफ फुटबॉल मैचेस कुड हैव बीन वन, हम खेलते ही क्यों है, मतलब देखते ही क्यों है, जस्ट प्ले फीफा यार एवरीवन. मतलब दैट्स द होल पॉइंट. मतलब इट्स अबाउट पेप स्टेइंग देयर. लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स है. मे बी कल को थिंग्स माइट चेंज. Pep might not stay there, things might change really. मतलब you never know. So again, injury record है, lot of things that will be taken into consideration. But yes, at this point in time, they are preparing a great squad. और मैंने एक वीडियो किया है talking about this backup squad as well, and that's interesting. मतलब they don't have so many numbers. हमें सब लगता है City are kind of building, I don't know what, Galacticos नहीं, इतने सारे numbers नहीं है. They are building a strong quality वाला squad. Maybe what Liverpool has worked towards, that is what Klopp also likes. So maybe other teams need to take a leaf out of them. I don't think jealous is the word. Absolutely. Yeah. I think we are past dispensing salt and we are past getting jealous. I think it is a new fanboy trait जो लोग jealousy दिखाते हैं. But हाँ, for sure, I think बहुत massive. City are definitely built a anchor of a ship. So I think they've done a massive job. एकदम यार. टीम के बात कर लेते हैं. बाय द वे, आर्सेनल लिवरपूल, आई हियर फिर्मिनो इज फिट. ही वाज प्रोबब्ली फिट लास्ट मैच. आ गया, अनाउंस कर दिया उसको. अच्छा, तो मतलब अगेन व्हाट इज योर स्टार्टिंग फ्रंट थ्री फॉर दिस गेम कंसीडरिंग आर्सेनल 4-3-3 खेलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
4-3-3 खेलती है। जोटा को डालूंगा मैं इस गेम में, उसका थोड़ा फॉर्म ढीला है पिछले काफी गेम्स से, बट स्टिल आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्टार्ट, तो उसको डालेंगे। फिट है वो, लास्ट गेम भी इतना कुछ खेला नहीं है वो। लेफ्ट पे उसको डालेंगे, माने को सेंटर पे और राइट पे साला को। बाकी मिडफील्ड में केटा को डालेंगे, बिकॉज अगेंस्ट एस्टन विला दे गेट वेरी ओपन समटाइम्स एंड दे बीन कंसीडिंग मेनी गोल्स दिस सीजन, तो हम केटा को डालेंगे। केटा अपनी एनर्जी डालेगा थोड़ी बीच में, और Okay. you know he'll get a chance to prove again कि he can score. So let's see Okay. what happens over there. And Pichu, though, I think it is pretty much sorted. Matip and Van Dijk supported by. I want Tsimikas to start this match against Robertson. I think Robertson deserves some rest. ज़्यादा उसने गेम खेल लिया, तो उसकी आउटपुट इतनी कुछ खास आ नहीं Get रही है. ready for Chelsea, huh? Yeah, for sure. I think Chelsea में Yeah, don't be surprised if Alisson is rested and we start with Kel Heller. You know. really? भाई पता साहब. नहीं. I'm just kidding. But you never know, यार. Because Klopp is always, laid focus on Premier League and Champions League. तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे सकता है. ऐसा भी हो सकता है कहीं से आउट ऑफ द ब्लू. चेल्सी अपनी पूरी प्रॉपर फायर अप लाइनअप लेकर बैठी है, और लिवरपूल लीली लाइनअप लेकर बैठी है. ये भी हो सकता है. You never know. Exactly. So Abhishek and Sabi, मतलब again touching upon ex-Liverpool players. Certainly, यार. First of all, at Villa Park. So मुझे लगता है यार, they will anyway get renovation. From Liverpool away fans, I would say yes, definitely, यार. Coutinho has got them the funds that Sadiq भाई ने highlight किया था. He's got them the funds. ठीक है. He's done very well for them in the past. Gerrard is an absolute legend, one of the legends of all time for Liverpool. और Danny Ings, भाई, Danny Ings is also an ex-Liverpool player. काफी लोग भूल रहे हैं यहाँ पर, और he is the man in form. He, along with Bundia, is the person who kind of did it for Aston Villa last. I know Norwich City और Burnley थे, but they have still got 7 points in 3 games, despite वो last few games अच्छा नहीं कर रहे थे. I think there is certainly a proper match यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ charity नहीं होने वाला है. Yeah, again, this is something that I don't see it happening. Yeah. But ये बात है बिल्कुल कि आपने जो बात बोली है, मैं भूल गया. एक गनाबरी ना दिमाग में घुसा दिया लोगों ने. इससे पहले आपने क्या बोला था? कुछ बोला था आपने. नहीं, as in we were talking about, obviously, as in the ex-Liverpool players, Danny. Yeah, so I was actually talking about Gerrard as a manager. He's a very professional person. उसका क्लब चाहे चेल्सी में भी होता ना, he's a lifer. पहली बात, उसका मन जरूर डिफ्लेक्ट किया था बीच में कि ट्रांसफर लेना है, बट अगर उसकी प्रोफेशनलिज्म देखोगे वो रिफ्लेक्ट करती है. When he joined Aston Villa also, the pre-match conference, it showed his personality. He's very professional. So that comes on his antics as well. So I think Gerrard is definitely going to give Liverpool a tough fight. Irrespective, प्यार उसका लिवरपूल के साथ ही है, बट भाई वो तो प्रॉपर प्रोफेशनल है, तो बात तो है. Interesting. यार मैं काफी यार again thank you mods for kind of reminding the people. यार again people watching, मतलब for you, it's just another stream, and I know you kind of support me, and thank you for that, and of course the panel यार. लेकिन यार एक like button दबा दीजिए. जो भी नहीं किया like button दबा दो. It's free of cost. And same with the subscription. I know I shouldn't be speaking in this language, but क्या होता है, lot of people do not realize that, and it really helps. Every like button helps, and because of more likes, the stream will be, एक suggestion आएगा उनको कि यार आप लोग भी देखो. आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप यहाँ पर हो, राइट? तो इसलिए आप लाइक कर दीजिए certainly, और सब्सक्राइब तो मत करना भूलना, certainly that is a must, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी. And we'll be talking more as well. I know Uday needs to go in a few minutes, लेकिन हाँ, and I'll come to the comments. Absolutely, मैं आने वाला हूँ काफी comments में. क्विकली यहाँ पर आई डोंट नो, इंजरीज की बात कर लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ आई थिंक विला के है, मतलब काफी इंजरीज है. जेकब रामसे इज आउट, कॉर्टनी हाउस इज आउट, लियोन बेली इज आउट. तो अगेन मतलब इट्स काइंड ऑफ प्लेइंग इनटू लिवरपूल्स हैंड्स. But again, like Uday said, Liverpool needed much more, and I think it's just about a do or die mentality. वो आएगी यार, क्वालिटी भी निखर के आएगी, and they kind of on paper will win it. So people, what do you think? मतलब क्या होने वाला है? Despite जो हुआ था weekend में 1-1 against Spurs, maybe you can say midweek game था. This time basically they are more ready. They know what exactly is needed, and it's maybe ex-Liverpool players that will help. What is your prediction? Aston Villa Liverpool. Get in your chat, everyone. क्या score prediction है? Or I will take a quick score prediction. Uday से भी. Uday, what do you think? I think Liverpool should win it easily यार. कोई 3-1, 2-1 जीतेंगे हम. मतलब हम आराम से जीत जाएंगे इनके अगेंस्ट. Aston Villa is not like very like Dean Smith के अंदर वो थोड़े वो भी थे, at least sturdy थे पीछे डिफेंसिव. पता नहीं क्या हो गया उनसे. They've been leaking goals also. It's not that they have been winning off big margins. छोटे margins से हार रहे हैं गेम जो हारे हैं वो. But still, I think they're very hot and cold defensively also. I don't specifically, I think I'll point out to कौन सा उसकी डिफेंडिंग इतनी अच्छी नहीं रही है. But जो हाउस है, हाँ मानता हूँ वो
एक he's not a great defender, but he's a tall, sturdy defender जो injured है, तो obviously his aerial prowess was definitely there in many games. बाकी जो आपने लियोन बेली बोला है, हाँ भाई वो उसकी pace was electrifying, so I think लियोन बेली की injury might be a miss, but he's not a player, a starter. He's not a 90-minute player. He's more of a super sub addition या 60 impact minute player है player, basically. impact player वो. Absolutely. यार रिपोर्टर्स यार मतलब जज रिपोर्टर्स मतलब उनका काम ही है डिसरेस्पेक्ट करना, राइट? ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब अगेन यू नो सेम थिंग हैपेंड टू टुकल. मतलब दे आर टॉकिंग लाइक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला गया ना, लास्ट तक मैं वेट ही करते रहा. ऑल आई वाज वेटिंग फॉर एज अ फैन कि यार कौन फिट है कौन फिट नहीं है. दे वर आस्किंग ऑल द अदर स्टफ, ऑल द थिंग्स दैट रियली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन. तो अगेन मतलब इट्स इजी सेड एंड डन, लाइक वी आर प्रोबब्ली गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. लेकिन यार अगेन मतलब दे हैव टू यू नो सी मतलब द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ थिंग एंड आस्क द यू नो रियल गुड स्टफ. ओके ये क्या है? गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एग्जॉस्टेड आफ्टर रमजान. आई प्लेड माय फर्स्ट मैच. अच्छा कोई नहीं यार, मतलब होपफुली और वेल. 4-1 लिवरपूल, चाबी कोचर सेज. इंटरेस्टिंग. मतलब हाँ, वन गोल इन अ स्ट्रेंज वे जो कंसीड किया था ना लास्ट मैच में, दैट वाज अ गोल दैट यू वुड से दैट यू शुड हैव कंसीडर्ड. एक बहुत ज्यादा स्पेस था फॉर आई थिंक सेसनियन. तो मे बी आई कैन सी यार, कंसीडरिंग सैटरडे का मैच है, एफए कप फाइनल, मे बी एज एन मे बी ट्रेंट और like you said Uday, Robertson. One of them will be kind of you know rested here and maybe you will get a change, or maybe Henderson as well. Henderson ने start किया था वो game, I know positive लाते, but I think that defensive element is important with Ings, the you know the form he's in. A narrow 2-1 for Liverpool and Aston Villa versus Liverpool 3-5. Just for that prediction, man. Just for that prediction. I hope मैनचेस्टर सिटी 2 गेम ड्रॉ कर दे या एक हार जाए और एक ड्रॉ कर दे. भाई हराओ यार सिटी को, बहुत हो गया. लीग जिताओ, लिवरपूल शुड विन द लीग. कम ऑन, गेट इन देयर बॉयज. हेलो अंकित भैया, हेलो. एक्चुअली हम चेल्सी के पास आएंगे अभी. चेल्सी नेक्स्ट है. अंकित, बिग रेस्पेक्ट मैन, यू रिप्लाई टू एवरी चैट. आई ट्राई ब्रो, आई ट्राई, फिर भी गाली पड़ती बहुत. और अगेन इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, आई थिंक दिस चैनल वी हैव अ सुपर चैट ऑप्शन आल्सो, वो भी है. इफ यू आर एबल टू अफोर्ड, फैंटास्टिक. हम प्रायोरिटाइज करेंगे और भी यार पॉसिबल. Yes, absolutely. Your support is something which has made the channel, or hopefully वो रहे till ever, right? Simply put, we want to grow even more, and so does Loudmouth Football as well. So do give him some love. Certainly बहुत अच्छा content आप देख ही रहे हो. Last 40 odd minutes से we are speaking and having a wonderful discussion about transfers, about Aston Villa, Liverpool. और quick predictions before going. Uday, I know you have to go, लेकिन quick prediction about the Chelsea game, और मैं cover करने वाला हूँ Chelsea game in particular. Leeds versus Chelsea rivalry एक है यार, मतलब हाई इंटेंसिटी गेम होगी. मतलब व्हाट डू यू थिंक? वी नीड इट नाउ एंड लीड्स डू एज वेल. You definitely need it because Arsenal are lurking right behind you. तो fourth पहुंच सकते हो आप. So you have to win this game. I think it is very crucial for you guys to win this. बाकी Leeds इतनी कोई खास नहीं है बीट करने के लिए. They're not the relentless Leeds that we used to see. Jesse Marsh has definitely instilled more balance in them. But एक तरह से गोल थ्रेट पड़ रहा है, ऐसे 3 गोल मार लिए, 4 गोल मार लिए against the bigger teams. Is not there anymore. So I think you guys are in a good position. Plus, I think Dallas is also out with a very bad leg break. But Liam Cooper might star against you guys. So that is a good defense. Cooper is fit. Cooper is as in obviously the center half. You know he will start करेगा. लेकिन I think उनका जो ना cover right back है, he probably scored. Llorente scored in the last game, or you know he might have the confidence to start right back. So I know मतलब Dallas is out, and of course यार वो Ailing का जो था ना, that is हद. मतलब he kind of crossed the limit. But yeah, but still I think they have a squad. Yeah, ऐसे मतलब it's not like they don't have a squad. Up front they probably are lacking. Bamford not being fit, I think you know they are lacking a lot of players. So proper striker नहीं है उसका. Yeah, Dan James भागता रहते हैं वो बेचारा. उसको कोई नहीं खेलेगा आज, मतलब 14-15 runs. I am predicting that Gelhardt जो था ना, जो return leg भी अच्छा किया था Gelhardt, he probably played in the weekend also if I'm not wrong. और he is probably the one जो लग रहा है कि यार he got a raw deal because of red card, उसको आना पड़ा. So I think as in Jesse Marsh will probably play him absolutely. But irrespective, Dan James के 14-15 touches रहते हैं half में. So I think Chelsea will take advantage of that. I hope so bro, definitely. But again I think आपको जाना है Uday, if not wrong. Thanks a lot. और again people, like I say, you can see यहाँ पर screen पर भी है. Do subscribe to Loudmouth Football. The link is in the description below, and he will be back. Certainly हम बात करने वाले. Maybe banter आप सुनेंगे मेरे क्या, I don't know. और maybe congratulations. But Saturday का big game होने वाला है. So again
What about that? Last words उस पर quickly. भाई हराएंगे आप सबको, हम एक और ट्रॉफी जीतेंगे, सीजन बहुत भाई हो गया मैं है, उसी को पूछा तो ही क्यों हराएंगे लास्ट भाई। टीम्स. कोई we will not leave you guys. Mendy specifically has been hot and cold again. I don't know if you agree or not, but लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं केपा का ही कमबैक है, शायद नेक्स्ट सीजन केपा खेलेगा मेंडी के, बट आई डोंट नो, ये सब बात वाहियात बातें हैं, चलती रहती हैं. But, Absolutely, bro. But thank you for coming on. And yes, people do stick on. यार काफी matches है और काफी transfers है. We'll be talking about. See you there. See you soon. But I will be taking on the stream right now. And yes, Nitesh बोल रहे it's official on Man City Instagram. अंकित भैया check it out. क्या है भाई official? आप भी बोलिए क्या है. This is going to be interesting. Oh, Haaland वाली official है, right? Pretty much sure that is what you're talking about. But interesting रहेगा what you're talking about. But I still feel यार ये Germany वाला है ना, that will be a big story, probably a bigger story even, right? You know, वो एक midfield corridor में काफी clubs are going for it. Yeah, I'm seeing it. Haaland is done. Man City can confirm that we have reached an agreement. Let me actually share the screen ही. भाई साहब ये तो official भी हो गया. पता नहीं यार, कल भी एक stream कर रहा था, उसके दौरान ही हुआ था, and today as well. Look at this. Man City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the club on 1st July 2022. The transfer remains subject to the club finalizing terms. Okay, that will be done. That will be done absolutely. लेकिन मेरे ख्याल से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, काफी अच्छा kind of it's a great transfer. Absolutely, I would rate this transfer right up there with the transfers जो हुए थे. No two ways about it. अब देखते हैं down to Haaland, how does he well? Oh yes. हार्दिक याद दिलाते हुए, we do have 2 channels here, so remember everyone watching, there are 2 channels, काफी सारा content आने वाले दोनों channels में, so do not forget, आप यहाँ नाम देख सकते हैं मेरा, Almighty Sports Plus, वो है दूसरा channel, right? If in case आप नहीं जानते हो, Leeds or Everton getting relegated won't be good for Premier League, but Burnley won't make any difference. So I agree with you, Matata United, I agree. लेकिन अगेन यार मतलब लीड्स अंडर बियल्सा वाज अ डिफरेंट एलिमेंट, अंडर जेसी मार्स अ डिफरेंट एलिमेंट, तो आप बोल नहीं सकते हो वो मे बी बर्नली चेंज स्टाइल. अब दे आर गोइंग टू गेट अ न्यू मैनेजर एज वेल, तो यू कैन नॉट से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ना, मतलब दे माइट चेंज द स्टाइल, दे माइट बिकम अ लीड्स. तो थोड़ा अनफेयर है काइंड ऑफ जजिंग देम बिकॉज़ बर्नली हैव प्रूवन longer in the Premier League, so I would say they kind of deserve it. But again, मैं आपके साथ हूँ, I don't like watching them play. That's the bottom line. And Chelsea के साथ काफी difficult होता है. Not that I like Leeds, but talking about Leeds people, and hello to Rajesh as well. Yes. So I will be covering a few kind of things here. Just listen to it. Trust me, Leeds versus Chelsea. This has been one of the, as in the biggest rivalries in English football. काफी undermine किया जाता है. 1970 FA Cup, I don't know if you all know, literally लड़ाई हुई थी, वो स्टैंड अप करते थे ना in terms of supporters, और वहां पर literally लड़ाई हो गई थी, replay हुआ था, and then we somehow kind of gotten over that kind of match. Proper stampede हुआ था, and after that match by match over the years, Leeds Chelsea is probably the biggest thing for a Chelsea fan, for a Leeds fan. काफी seasons तक they were not in the league, and it proves that जब वो आए थे under Lampard, जो आई थिंक 3-1 विक्ट्री था, जीरो ने स्कोर किया था, द एटमॉस्फेयर इवन अंडर कोविड कंडीशंस, क्या एटमॉस्फेयर था, दैट इज द रीजन. Leeds, by the way, they are in relegation, they are properly in relegation, अभी 18th है as we speak. I think Burnley, Leeds, both of them are favored for relegation. One of them has to get relegated. I know Watford और Norwich हो गई है, so it is that extra motivation along with the rivalry. Even the last game, आपको याद है जो हुआ था फर्स्ट लेग, प्रॉपर लड़ाई हुई थी. It was 11 versus 11 लड़ाई. After the match they kind of almost फाइट पर आ गए थे. 2 penalties मिले थे चेल्सी को. It was 3-2 difficult victory. One was lucky. I will have to admit, Rudiger थोड़ा सा मतलब lucky नहीं, smart. He was just smart. For a change, a Chelsea player was smart in the box, so he won a penalty. ठीक है, लेकिन it was 3-2 और काफी agitated थे Leeds players. तो Patrick Bamford, next Chelsea player वहां पर है, but unfortunately is injured, right? And like I said, Rafinha is the danger player. Rafinha is the guy जो हमें careful रहना पड़ेगा. Again, any Chelsea fans in the house, do let me know who is that player जो Leeds में जो है हमें बहुत careful रहना पड़ेगा. But in a strange sense, Rafinha hasn't been the player that he's been in the last few months for the last couple of games. ठीक है, तो हो सकता है उनके माइंड में वो बारसा का ट्रांसफर है. That is a possibility. क्योंकि लास्ट मैच में भी आर्ग्यूबली ही वुड हैव गॉट अ रेड कार्ड ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन मिला नहीं था.
And I think obviously Arsenal ने बहुत अच्छा भी खेला था. I have to give it to Arsenal there. I know not liking it, but it's a fact. Diego Llorente ने स्कोर किया था and he is cover for Luke Ayling जो missing है at right back, and same as Stuart Dallas वो भी missing है, like I said. 10 games without a clean sheet at Ellen Road. That is the record of Leeds. 10 games without a clean sheet. So Chelsea, Leeds are there for the taking. Please, guys, please, hago mat. Last few matches में Chelsea, last 5 games में in the Premier League, Chelsea Football Club, we have just won 1 game. And that is actually a stat. Last 3 games in the Premier League, we have been winless. And it's high time भाई, लीड्स का डिफेंस है ही नहीं at home. Please पेल दो उनको यार. It's rivalry plus Arsenal are just 1 point behind, so we have to get. So यार, we cannot go behind Arsenal. Plus we have an FA Cup final, big FA Cup final is Saturday, so we need to have some confidence. So it'll be interesting यार. Chelsea fans or neutrals, tell me what is the team that Chelsea को खेलना चाहिए यार इस गेम के लिए. I think it's very important. History plus table plus form, because the FA Cup सब चीज है. Motivation should be very very high, unlike recent games. Or yes, we have dropped 20 points from winning positions this season. That is why हम हैं जहाँ हैं, and that's a real fact. But again, let me come back to the chat. यहाँ पर थोड़ा सा rant हो गया मेरा, लेकिन I'll cover a lot more stuff अभी. लेकिन well, Ankit भैया, how is Julian Alvarez as a player? Well, Julian Alvarez is very good. From what I know, again, I wouldn't claim यार मैं देखता हूँ week in week out. I cannot possibly watch his play, but from the videos that I've seen, yes, definitely he looks like a player. In a strange sense, a Kun Aguero kind of player हो सकता है. Who knows, right? As in if molded properly. But because of Haaland, जैसे मैंने कवर किया मेरी वीडियो में, I know मैं spoiler नहीं देना चाहिए. I think you guys should go check out my video. I have done it काफी मेहनत से on both the channels वीडियो किया है मैंने, तो do check them out, especially the one on Almighty Sports Plus, क्योंकि वहाँ पर मैंने literally बात किया है how will Pep manage a squad, or Julian Alvarez maybe will be in the squad but not as a starter because of Haaland is what I'm guessing towards. Well, please don't be charity FC against Leeds tomorrow. We need them to go down. Absolutely, bro. Leeds fans, sorry. I want Leeds to go down. Blatantly मैं बोल रहा हूँ. ये है हमारी राइवल. क्यों नहीं बोलूं भाई? क्यों नहीं बोलूं? लीड्स करती है भाई, गंदा गेम खेलती है हमारे साथ, गंदा वाला. And that is like proper fights पर आ जाती है. And I don't want to see that. That is a proper rival, and history has something. Not just that. Even under Bielsa, against popular opinion, मैं बोलता था, the reason I don't support Leeds as much as बहुत न्यूट्रल्स करते हैं, उनका एक ही यार, घोड़े जैसे एक ही डायरेक्शन में चलता है. They don't have a second way of playing, and that is what I said. Maybe Jesse Marsh might change my opinion, I don't know. Like, I'm just kind of putting it out there. Okay, this is interesting, Amal. Thank you for putting it out there, because lot of reports, और मैंने अपने वीडियो में बात किया था about Alonso, Tuchel, bust up जो हुआ था. Reportedly पहले लग रहा था इंजरी है और tactical था because he's been outpaced. पता नहीं यार. This is basically against Leeds. I think again against popular opinion I would start Alonso. भाई, Tuchel, you're a manager. You are a people's manager. Alonso, you're an experienced player. कितने मैचेस बाकी है चेल्सी के सीजन में? We are literally 3 matches. Just 3 matches. We have in the Premier League, that is, right? And of course, the FA Cup final. So, this is our natural left wing back if we are playing that system. आप खेलोगे ही. We don't have Ben Chilwell. He's not going to come back. Saul is not a natural left wing back. सार ने दिखाया कैसे हकते हैं पिच पर. ठीक है, वो नहीं है चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए फर्स्ट चॉइस. लेकिन I'll come to the starting 11. Again, people in the chat, देखते हैं आप लोग भी अपने starting 11 लाइए, और especially Chelsea fans. यहाँ पर Just Viola said Leeds will come out all guns blazing to avoid relegation, and Chelsea will keep them up. Oh, by the way, it's a Chelsea thing again. Just Viola and every Chelsea fan out there, and even neutral fan, just know that the reason we say कि हम charity FC है. हम खेले थे एवर्टन के साथ. एवर्टन कहाँ थी लीग में? कहाँ थी और क्या किया हम एवर्टन के साथ? हगे प्रॉपर. ठीक है, दैट इज चैरिटी एफसी. देन वी डिड दैट टू आर्सेनल. उनका रन क्या था, हमने क्या किया, और जब फॉर्म वापस दे दिया उसको. आर्टेटा इनको को प्रॉपर फॉर्म दे दिए. दिस इज यार, ले लो, थाली में ले लो, परोसा है हमने, उतना ही नहीं. Then now Leeds, talk about Leeds. They have now lost games, I think, against Man City and against Arsenal. Or I'm pretty sure
you know the rivalry there is, वो relegation zone में है, तो they will come up. I am seeing that possible draw भी हो सकता है, and I'll come to predictions. We'll probably drop points. Next, we are also playing Leicester City. Leicester City, they have fallen off a cliff. You know, they have given an example of how to fall off a cliff. 9th थे, मैंने बाबा के साथ लिटरली हमने डिस्कस किया था क्लियरली ऑन मल्टीपल स्ट्रीम्स कि नहीं, लेस्टर सिटी का बैंग ऑन 9th फिनिश करने वाली है. They are something like 14th or something अभी. And I'm like shocked, man. So I think they will come back and suddenly wake up हो जाएंगे चेल्सी के against, and that is what we do. That is what we do. Motivation factor at the wrong time for them and for the right time for us, or vice versa. जैसे भी बोलो. Well, 22 likes to 100 likes. पता नहीं अभी हो गए कि नहीं. Let me check. Oh यार, come on. Let us get to 100 likes, boss. Let's get to 100 likes. देखो तो minimum मैं तो सोच रहा था definitely we need to get to 150 likes. लेकिन hopefully we get there certainly. You know, let's get the likes up. And yeah, काफी सारा content आने वाला है तो throughout the summer. बहुत सारा news आने वाला है. I have started a lot of questions. मैं आने वाला हूँ. मैं भाग नहीं रहा. आज मैं बात करूँगा आप लोग से proper. Destroy Leeds and tell Lampard to destroy Tottenham. Amal, that is the trick. That is the trick, man. Absolutely. Come on, like the stream, guys, and subscribe to both the channels. Thank you. Ankit, will FA Cup victory compensate for finishing below Arsenal? Great question, Matata United. First of all, I don't think हम नीचे होंगे आर्सेनल के, because I think Arsenal also मतलब इतना easy नहीं है. On paper आप बोल सकते हो, लेकिन नहीं. It's easier said than done. They are Arsenal. Remember, they are Arsenal. Again, no disrespect Arsenal fans. आपको खुद ही पता है एक consistent run बहुत ही rare होता है. Let's see. I feel if you give me the FA Cup, absolutely, bro. Absolutely, bhai. Matata United, I will take FA Cup in a nutshell. Simply put, क्योंकि यार we have been losing FA Cups for fun. हमें जीतना चाहिए था against Arsenal, if you remember. You know, the referee, I would say. But also we didn't play that well in the second half, I remember. Pulisic got injured. That FA Cup final, I remember. It pains me to remember about it. Leicester City, Rene is in the house. You know, Leicester City, as much as I say that, okay, Kepa should have done better and probably that was handball and whatnot, Leicester City deserved it. They wanted it more. On paper, we should have won it. Okay, 5 FA Cup finals in 6 years, and we have just won 2018 win. Is it for real? Absolutely no, bro. We have to win more. And I will take that any day. लुकाकू को सेंटर फॉरवर्ड खिलाओ, मिड में हैवर्ट्स और बैक में सिल्वा, बस इतने काफी है गेम सेट करने के लिए. ओके, थैंक यू शायद फॉर शेयरिंग योर टीम. एंड अगेन पीपल, आई डोंट नो इफ अदर्स हैव शेयर्ड द टीम एज वेल, एंड आई विल कम टू कमेंट्स. आई नो धीरे हूं, लेकिन द फैक्ट दैट आई एम एड्रेसिंग मोर कमेंट्स एंड गिविंग माय ओपिनियन अबाउट द मैच एंड स्टैट्स. For me, again, Chelsea fans and neutrals, let me know what your starting 11 is. मेरे लिए भाई, first of all, Mendy has to start in goal. No two ways about it. I know Kepa hasn't played, लेकिन Mendy has to start. Left wing back, Alonso, like I said, for obvious reasons. Right wing back, Reece James. उसको right wing back ही रखो भाई. Don't get him a right centre back, please. That is his strong point. He has to continue. Reece James has to continue at right wing back, or let him cross. बोलो भाई आप cross करो. Lukaku, get in the box. Lukaku has to play. Center half में I will actually rest Thiago Silva. Wrap him in cotton wool. हमें चाहिए Thiago Silva for Saturday. As much as मैं बोलूँगा top 4, top 3 is काफी important. Thiago Silva not being on Saturday will be a shock. ठीक है, please wrap him in cotton wool. He is a finals big game player. Let him be there for Saturday. और हम आएंगे, by the way, Thursday को हम live है, so do check us out for the FA Cup preview. Proper होने वाला है वहाँ. लेकिन उनके साथ चालोबा भाई, why in Tuchel starting Chalobah? Please start Chalobah, and I would actually start Chalobah at left centre back. You heard it right, because Malang sir हग रहे हैं. Rudiger at right centre back. हाँ, मैं Rudiger को risk लूंगा क्योंकि anyway यार वो चेल्सी छोड़ के जा रहे हैं. I would rather risk him than Thiago Silva. So Rudiger at right centre back, left centre back Chalobah, or the other way around. I know Chalobah can play right centre back, but मेरे ख्याल से I think Tuchel has to try something new. और Chalobah at left centre back, something that maybe for the long run भी काम करे. तो I think मैं थोड़ा experiment करना चाहूँगा. I don't know, people might disagree. Central midfield में, as per the report, as per the conference, I think our man Kante and Jorginho दोनों ही fit नहीं. They won't be fit to start. So the person who will start again will be Kovacic along with Loftus-Cheek, and that is something जो हमें attacking prowess देगा. Up front Ziyech भाई, लाइक Chalobah क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे भाई? Ziyech क्या हो गया? Ziyech को
I'll start Ziyech on the right wing. Werner hasn't been great in the recent 2 matches. So Ziyech on the right wing, Mount on the left wing because it's Leeds. He knows क्या rivalry है. Or up front Lukaku, Havertz off the bench. I don't know if your people agreeing or not. Chelsea should really feel a strong lineup. Whatever players we have, हाँ. I would like I said, मतलब 9 players खेलूंगा strong, and I'm hoping Kante fit हो जाएंगे यार weekend के लिए. Absolutely, that is a must. Lukaku will score against Leeds. Well, let's hope. Let's hope. Giroud ने अच्छा किया था, तो why not Lukaku? City is always favorite. Okay. When is who am I? यार season like I said काफी busy चल रहा है. Literally every day there are matches. But I am working on it, Rahul. I am working on it certainly. The who am I is coming like I promised. May में रहेगा एक episode, but I will publish it in advance. और बहुत सारा content आने वाला है. Like you obviously saw transfer window is open. तो अभी यार people unfortunately are more interested in that, so अभी reaction मिल रहा है, तो I'm just going with it, and we'll do that as well for sure. I love that as well, like everyone else. Madrid versus Liverpool prediction, भाई अभी बहुत early है. I will come to that. Gravenberch and Mazraoui deals almost done. Our defense and defensive midfield sorted now. Interesting. देखते हैं आदित्य, time will tell. Gravenberch, I'm a huge fan. मतलब again आपने देखा होगा last summer अपने स्काउटिंग रिपोर्ट की थी मैंने और चेल्सी पर्सपेक्टिव ने फॉर ग्रावेनबर्ग. हालैंड कंफर्म, यस एब्सोल्युटली. मैं बहुत स्लो कमेंट्स में एज यूजुअल. अंकित, इफ एनी कोलैप्स इन चेल्सी गेम अगेंस्ट लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस टू चेल्सी टीम ऑन एफए कप फाइनल्स अगेंस्ट लिवरपूल. वी हैव लिटरली कोलैप्स्ड इन रीसेंट मैचेस, और वो नहीं कंटिन्यू हो सकता है. दैट इज व्हाई आई एम प्लेइंग द टीम दैट आई सेड शायद. अगेन आई एम जस्ट होपिंग यार टुकल हैज गिवन देम अ हेयर ड्राई ट्रीटमेंट उसके बाद. Aspilicueta, as much as I love him, Sar, as much as he's tried his best, not enough. At least for now. Give him a rest. Why were Chelsea never interested in Haaland even before? Oh, भाई, Matata United, आप कहाँ पर हो? Chelsea, literally entire summer, आप हमारे streams देखो भाई. Rose, it was Haaland to Chelsea. It was, late Mino Raiola, we actually spoke to him, and he actually wanted money for him, Haaland's uncle, auntie and everyone. तो वो प्रॉब्लम था, तो इसीलिए चेल्सी ने शेयर नहीं किया इतना सारा और गए लुकाकू के साथ, क्योंकि चेल्सी थॉट एनीवे नेक्स्ट ईयर यार वो रिलीज क्लॉज आ जाएगा, बट हु न्यू दैट मैन सिटी विल कम इन अर्ली, और हमारा तो ओनर ही नहीं है, तो वी कुडंट इवन ट्राई दिस टाइम. ठीक है, स्टिल द ओनर इज नॉट देयर टेक्निकली इट्स नॉट साइंड. ठीक है. Tuchel has said in pre-match presser that the argument with Alonso ended in the first half itself and didn't continue to half time. So I think Alonso will start. Let's hope. But by the way, I was surprised यार, तो ज़्यादा प्रेशर में इसके बारे में बात नहीं हो रही थी और लेफ्ट राइट सेंटर बात कर रहे थे. I was very surprised. टीम न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे थे. प्लेयर्स इन्वॉल्व भाई, उनके बात करो. दो नॉट फॉर द प्लेयर्स आर नॉट इन्वॉल्व. हालैंड के बारे में पूछ रहे थे, व्हाट नॉट मैन. कम ऑन. Burnley and Everton are above Leeds, and to relegate Leeds, we have to hope for Burnley to win at least one. Interesting. मतलब again, Leeds, I would say कि यार they can get relegated. As things stand, they can. क्योंकि Burnley ने किया है, they have survived in recent seasons. So let's see. Tanmay is like we are charity FC. Okay, let's put in your predictions, people. क्या लगता है यार? Last few matches हम हग रहे. मुझे क्या लगता है ना? I will say Tanmay again. Maybe it's wrong. Maybe again against popular opinion, against form हो. We turned up for Spurs. आपको याद है? We turned up for Spurs क्योंकि वो Spurs थी. एक crowd एक अपने आप ही हमें अपने को turn up करवा देता है. And that is what Leeds will do. Leeds की rivalry हमें help करने वाली है. And by the way, we will be coming to other matches as well, people. But for this, I am certainly thinking that Chelsea will turn up for once before that FA Cup final. यार 100% we need the win. Come on, get that confidence going. Ankit sir. यार सर मत बुलाओ राहुल भाइयों. You can play higher lower online game on football theme, it will be fun. हाँ, again that is content भी सोच रहे हैं यार काफी, मतलब again when once the season kind of थम जाए ना थोड़ा, then थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलेगा, लेकिन certainly I am already thinking on those lines. बस चेल्सी को हरा दो ताकि हमें रफीनिया मिले चीफ में. यार बारसा फैंस, ट्रस्ट मी, रफीनिया अच्छा है, but is he going to be an upgrade on Dembele? I actually don't think so. I don't think so. हाँ, more as in fitness freak है compared to Dembele, ज़्यादा fit रहते हैं and all that. But again, I don't think so in terms of ability, skill alone. हाँ, he's close but not an upgrade. तो हाँ, don't hope so much, I would say. लेकिन it's a great deal as well अगर हो जाए तो. Yes, absolutely हमने देखा है. I hope. यार 2 more likes to 100, but 100 ही नहीं यार, अपना है ज़्यादा टारगेट. अपना टारगेट है 150. लेट्स गो टू 150 लाइक्स पीपल.
Rudiger to Madrid, here we go. Congratulations, that's what I can say. आज चेल्सी कल है, मोहम्मद बासिम कल है चेल्सी का गेम. With a few other games जिसकी बात करेंगे हम quickly अभी. Just while you mean Chelsea go rejected by Haaland, how is it possible? Yeah, people, we couldn't really pay up that much for Haaland, simply speaking, right? At that time. और we opted, यार Lukaku was available जो पहले initially नहीं थे, but Haaland was the number one target. Entire world knows that. वेल वॉच अलॉन्ग आज प्लान तो नहीं है अमित शर्मा, प्लान तो नहीं है, बट आई टेल यू अगेन आई हैव टू शेयर समथिंग. मैं आई वाज इन टू माइंड्स एंड आई सेड दैट यस इट्स माय मॉम्स बर्थडे. इट इज बेसिकली अ स्पेशल डे फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली. तो मैं सोचा यार इट्स एक्चुअली गुड टू स्ट्रीम, लेकिन जस्ट टू शेयर समथिंग, माय बेस्ट फ्रेंड्स डैड हैज पास्ड अवे. ठीक है, तो मैं सोच रहा था वेदर आई शुड रियली स्ट्रीम और नॉट, बट अगेन the show must carry on, so I am carrying on still, like just to kind of share, and that's really really sad. And he's my best friend, and if he's watching, like really, Abhi, sorry man, sorry to hear that, really, but that's really really sad, and condolences to the family. And I don't know what to say. I'm like totally spellbound uske liye. And I have actually seen uncle from childhood, so I know you can imagine what I'm feeling. So I'm not sure if I am in that mood of doing a watch along, but again Amit, let's see, as in if I really feel that probably that will keep me in mood, maybe I will. So do check out हमारे update होंगे on our social media as well as on our home page on YouTube community page, that is right, absolutely. But thanks yeah everyone for joining. Is it just me that Todd Bowley with goggles looks like Roberto Mancini is his Man City days? Interesting comment, Amal. काफी interesting. He looks quite stylish. लेकिन again मतलब you won't judge on that anything. Yeah, absolutely. Ziyech, sorry about that. Ziyech even sacrificed to play for Morocco. Exactly, भाई. तो थोड़ा सा मतलब I don't know, कुछ something behind the scenes चल रहा है. I thought first it's because of fasting, but then यार Eid भी आ गई and then he's not playing. मतलब there is something. Oh yes, by the way, this one I thought मैं शुरू करूँगा stream के. This was a very important thing. People do check out Thai Talks CFC. आप देख रहे हो राहुल ने बताया Thai Talks with a Z. Thai Talks space CFC. This is a channel वो भी basically ban हो गया था, just like Almighty Blues FC, because of similar reasons. He is my brother from the Chelsea community, a very young guy who knows his stuff, and I've spoken about him many times. I don't know, Ty, if you're watching. Unfortunately, it was banned, but again, because of her persistence, because of what he kind of mentioned to them the story, and deservingly, he has got his channel back. So do check out Thai Talk CFC. Or big warning to all the content creators out there: do not share the link with anyone whom you don't know, and they should have the camera on. Plus, you would have streamed with them multiple times. 46 watching. Well, अभी कम हो गए, but let's like the stream. 150 likes है. Sorry. So, Tuchel. मैंने cover किया. Sorry about that. Give me 1 minute. So again, people, do get in your questions, but give me 1 minute. I have to drink some water. Matata United. So I had covered this. Akbol Lahore. Why did he say that? No is the answer. No. Well, Lisandro Martinez, not a bad option, Ayush, but again, I think we are good for next year in the centre half position. We need someone like Rudiger. Someone, Guardiola, I have called Pau Torres. They have done that, more consistently. Okay, Marcelo Bielsa. पता नहीं यार क्या आइडिया है, देखते हैं. मतलब where he is, मतलब great manager, unfortunate. Okay, 2-0 Chelsea, देखते हैं. नहीं भाई, sorry, I won't be able to do the Barca live stream, लेकिन we'll cover, यार हम review करेंगे. So yeah, do press the bell notification because we will be reviewing the matches. Yeah, as in condolences for sure. Chelsea's watch along here. I'm not sure Baba is back in town. I will be discussing with Baba and Guruji, and one of us will do it. करेंगे. Yeah, exactly, man. As in the bad weather has got. It's just a change of weather, nothing else. I'm fine.
Yeah. As in, no, it's just a cold, nothing else. I have a throat infection, so as to speak, और कुछ नहीं है. But yeah, मैंने actually बहुत ज़्यादा rant कर दिया, तो थोड़ा सा effect आ रहा है. अभी I'm fine. Don't worry about that, guys. Absolutely, I am totally fine. It's part and parcel. Like I said, the show must go on, and it's about football, man. As in, at the end of the day, and we love talking about football. But again, predictions. I am predicting Leeds Chelsea. Chelsea will get a win. It will be Leeds. Will be turning up. लड़ाई होगी पिच पर. I can see a lot of yellow cards. Rudiger. That's why I'll play Rudiger, like I said. 2-1 to Chelsea. We will concede, but we will get the win before that FA Cup final. बहुत ही important final है. Trust me on that. Absolutely. Well. By what is the difference between playing with CDM and CAM? I think, yeah, first of all, it depends on the formation आप जो खेल रहे हो, ठीक है प्रतीक? So you have a proper CDM, you can play with basically 4-3-3 formation with two number 8s beside them, ठीक है? Which is what Lampard try कर रहे थे, which is what Liverpool play. Like Fabinho है उनका CDM, right? And then we have played in the past with a proper cam. 4-2-3-1 हम खेले हैं with two kind of pivot. वो है आपके CDMs और आपके cam जो है that is basically we had Oscar in the past. आपको याद है तो De Bruyne was sold from Chelsea. Oscar थे हमारे cam और he did a lot more I know, लेकिन he was a proper cam originally speaking. So that is what you're talking about. Havertz can fit into that cam kind of role. लेकिन again CDM आज के दिन में a CDM which does not really just defend. Rodri को देख लो. He plays a lot of balls. He's a ball playing CDM. ठीक है. So Busquets kind of changed. आप बोल सकते हो. Busquets changed that CDM role altogether. But he can do a lot more. So CDM can do a lot of times. He can be just a number 6 who can actually do a lot of possession play as well. Xavi, he could play back in the day as well in that position. Lekin you know that he was a proper central midfielder. 3-1 Shrey Patil, welcome bhai. What's your plan of celebration of Chelsea win the FA Cup? By the way, celebrations काफी बाकी है. I know first of all channel वापस आने के लिए I know काफी लोगों को promise किया था we'll do something. And yes, FA Cup के लिए करते हैं भाई. हम Chelsea boys will plan something together, absolutely. But first, let's go there. Let's win it. शायद big up यार आप बोल रहे हो खुद because yes, I know pun है वहाँ पर with the smileys, but you're a Liverpool fan, I know. Come on, 205 votes, yet only 101 likes. Don't miss to like the stream. Absolutely. Like I say, whether बारिश आ जाती कुछ भी हो जाता है, we are always there for you. And pretty sure आप लोग देख रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है. So like बनता है and subscribe मत भूलना दोनों channels पे. What's the difference between right wing back and right back? Easy है तो मतलब come on. For people out there, I know this is something that maybe आप नहीं सीख रहे हो. So Chelsea play with right wing back because we play 3-4-3 formation or 3-5-2 formation. So right wing back is someone जो wing पर basically is more stuck to the wing on the byline, whereas right back is someone who is basically more of a full back जो is more maybe a defensive kind of element versus a right wing back जो वहाँ पर आप you expect the person to actually take on people more, cross more, or you are actually running the length of the pitch. Hakimi is probably आज के दिन में I would say the best right wing back around. ठीक है, and that is what Tuchel को चाहिए था, but unfortunately हमें नहीं मिला. Trent can do the job, but Reece James probably does it better because of the fact that he runs the length of the pitch or defensively is more aware. So right wing back also has to defend, right? Victor Moses, he was a good one that we had. Let's hope, man. I don't know, man. It's really difficult for Chelsea to call these days. Real Madrid sold us a 28-year-old Varane and went for a 29-year-old Rudiger. Matata United, I won't really read too much into the age, to be honest. And I've gone on multiple streams saying that, but I understand. From a transfer window perspective, age matters. लेकिन again it depends on where they are in terms of their careers. ठीक है तो एक career different mode पर हो सकता है at different age. Thiago Silva, he's an example. He probably primed a little bit late आप बोल सकते हो, right? Okay, please use maximum Hindi bro. भीम सिंह, okay भाई आप हम हिंदी भी यूज करेंगे लेकिन वही है थोड़े इंग्लिश वॉचर्स भी है भीम सिंह तो हम थोड़ा मिक्स अप करते हैं. इट्स अबाउट बेसिकली द ऑडियंस. तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सब लोग को लेकिन यार एब्सोल्युटली यार मैं यूज करूंगा मैक्सिमम हिंदी एज मच एज पॉसिबल. एंड अगेन यार आप लोग अगर बोलिए कि यार इंग्लिश यूज करो हिंदी करो, इट्स अबाउट यू गाइस. आप लोग का चैनल है, इट्स नॉट माय चैनल. आप लोग देख रहे हो तो यू आर द पीपल कॉलिंग शॉट्स. और वापस इंग्लिश आ गया. आई नो होता है यार बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत आप मैनेज कर दो. यस हो जाए यार. अंकित ओपी फॉर अ चेंज एंड राहुल ओपी भी काफी मेहनत करते हैं. राहुल can't wait to hear more for the new owner. Yeah, as in
टुकल ने बोला है कि यार बात ही नहीं हुई है, तो दैट्स लिटिल बिट स्ट्रेंज। अभी तक बात ही नहीं हुई है बोली और टुकल की, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मैं एब्सोल्युटली बोलूं तो। अरे यार यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन द फॉर्मेशन। एक काम करेंगे ना साई और बाकी लोग भी, ये क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, वी विल डू फीफा स्ट्रीम्स इन फ्यूचर, उसमें करेंगे क्योंकि वहां पर हम एक्चुअली पिक करते हैं प्लेयर्स एग्जैक्टली राइट, तो उस पर करेंगे। लेकिन आई कम बैक टू दैट। साई थैंक यू यार क्वेश्चंस के लिए, एब्सोल्युटली। ओके, of River Plate is a good player, can Chelsea go for it? Ayush, thank you यार वो नाम के लिए। I personally do not know much about him. मैं फॉलो नहीं करता रिवर प्लेट इतना क्लोजली, बट मुझे पता है लिंक हुआ है सर्टेनली, और वो हम जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं। मतलब अगेन अंकित भाई, डू यू हैव डन अ स्काउट रिपोर्ट फॉर प्लेयर, व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड? यस, मैंने किया है। और पीपल आप चेक करिए, चेकआउट हमारे यूरोस के जो थे ना, यूरो 2008 सॉरी यूरो 2020 यूरो 2020 का जो हमारा पूरा सीरीज था, हमारा प्लेलिस्ट में है, डू चेकआउट। हर एक लाइव स्ट्रीम में हमारा सेक्शन हुआ करता था। हर एक लाइव स्ट्रीम में हर एक हफ्ते में जो भी खेल रहा था ना, हम स्काउट कर रहे थे प्रॉपर कि इस हफ्ते में दीज आर द प्लेयर, और खाली उसी हफ्ते के परफॉर्मेंस पर नहीं, उस प्लेयर का बेसिकली जो सीजन रहा है हम पूरा स्काउट कर रहे थे। हमने काफी अच्छा स्काउटिंग रिपोर्ट किया, और मैं ही नहीं, आई वुड गिव अ शाउट आउट टू चेल्सी पर्सपेक्टिव भी, क्योंकि ही हैज अ सीरीज एज वेल, स्काउटिंग फॉर चेल्सी। तो हमने स्काउट किया है काफी इन द पास्ट, और हम करते रहेंगे। जनवरी में भी हमने ट्रांसफर शोज किए थे, वहां पर भी देखिए राजेश, डेफिनेटली। I think Haaland will take one season to adapt. Fair enough. Viewers are growing. Good to see. Well, needs to keep growing. Shrey definitely helps. आप बहुत support करते हो खुद, and like everyone else, absolutely. And I hope everyone has liked the stream, by the way. Well, अपने को celebration में involve होना मांगता है, what say Ankit? इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग। यूपीसीटी एम्फीथिएटर अगेन मैच। अच्छा, तो शायद अब मेरे को पता नहीं था आप बैंगलोर में हो। इंटरेस्टिंग। वील प्रॉब्ली टच बेस, या डेफिनेटली। इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ मैन यूनाइटेड, which 3 signings you will make? इंटरेस्टिंग। मैं जाना चाहूंगा यार, एक तो मैंने कवर किया है प्रॉपर ट्रांसफर स्टोरीज। लगता है आप लोग ने ना देखा नहीं वीडियो अभी तक, देख लीजिए यार कभी सोलो वीडियोस भी। लेकिन हाँ, एडसन अल्वारेज मैंने कॉल किया। एडसन अल्वारेज इज वन, वो अयाक्स से बेसिकली इज अ गुड फिट, टेन हाग में खेला है, और दे नीड अ सीडीएम। तो मेरे ख्याल से सादिक भाई भी अग्री करते हैं, एडसन अल्वारेज इज वन सर्टेनली। एक फुल बैक चाहिए भाई, आपको एक फुल बैक चाहिए। वो कौन होगा वो मुझे पता नहीं, एक फुल बैक डेफिनेटली चाहिए। यू आर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। वैन बिसाका, लूक शॉ नहीं जिताने वाले आपको टूर्नामेंट, दैट इज अ फैक्ट। ओके, दीज आर द 2 एसेंशियल साइनिंग्स। और आप बोलोगे मे बी फुल बैक जो राइट सेंटर बैक भी खेल सके, दैट विल बी आइडियल, दैट विल कवर 2 पोजीशंस। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चाहिए, एक मे बी एक विंगर जो आपको लाई गोल्स, बिकॉज अभी तक आपको पता नहीं क्या होगा। अमार डियालो का ही इज नॉट रियली लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन, और मेसन ग्रीनवुड का आई डोंट थिंक वो आने वाला है इन द पर्टिकुलर फॉर्म। और इतना ट्रस्ट करेंगे क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको इन द फ्यूचर? आई डोंट थिंक सो। दैट इज व्हाई मैं ये 3 पोजीशन बोलूंगा। Okay, yes, absolutely. Is a prime. Lumani or Smaster like. Thank you. Always helps. Looking at the Pep style, can Haaland be a failed signing like Lukaku at Chelsea? यार, in the past आप बोलोगे maybe off the pitch issues के वजह से Pep hasn't got the right output out of Zlatan Ibrahimovic. आपको याद होगा, Ibrahimovic hasn't done really that much for Pep. Sami Neto has done, लेकिन हाँ again not that much. तो मैं बोलूंगा स्ट्राइकर्स है इन द पास्ट वेयर ही नॉट गॉट द बेस्ट आउट ऑफ, तो मे बी, लेकिन ऑफ द पिच इश्यूज के कारण ही हो सकता है। द फैक्ट दैट वो 21 है, आई नो वो काफी ब्रैश है द वे ही कम्स अक्रॉस, बट वो 21 है, विल हेल्प पेप, तो वो एक सुनेगा बात होपफुली। यस एब्सोल्युटली, लेकिन यार इट्स इजियर सेड देन डन अंकित, लाइक वी से ऑलवेज। And yes, 5 more likes to 125, but let's get to 150 as well. Let's hope our situation gets quickly, because बहुत ही खराब वाइब आ रही है मुझे for next coming games. Hope I am proved wrong. Okay, Mr. Chelsea, FA Cup बड़ी, FA Cup के लिए हमें जाना चाहिए, whatever be it, just go for it. और यार आई नो काफी चेल्सी की बात हो गई, काफी लिवरपूल की बात हो गई, और couple of other matches भी है। आई नो लेस्टर फैंस भी थे in the chat. I know Rene is still around. Everton have an important match. Everton have an important match against Watford. Watford हो गई है relegate, और Lampard for me
सेव करने वाले हैं एवर्टन को। द ग्रेट एस्केप आप बोलोगे मे बी, जस्ट अबाउट। एवर्टन लग रही थी डूम्ड लग रही थी, दे आर लाइक डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट रेलीगेटेड, लेकिन नहीं, दे हैव कम बैक अगेंस्ट चेल्सी। हाँ, आप बोलोगे चेल्सी ने फेवर दिया है, लेकिन आई थिंक एवर्टन लुक गुड। रिचार्लिसन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर, सो आई कैन सी एवर्टन बीटिंग वॉटफोर्ड। वॉटफोर्ड यार गेटिंग रेलीगेटेड, दे विल बी रियली लो एनीवे। एवर्टन बीटिंग वॉटफोर्ड, गेटिंग अ प्रेडिक्शन, मैं बोलता हूँ एवर्टन टू बीट वॉटफोर्ड 2-0 अवे। और वुल्व्स सिटी फैंस बहुत वेट कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा यार प्ले योर बेस्ट टीम, एब्सोल्युटली। आपके लिए दिस इज द टूर्नामेंट दैट यू आर प्लेइंग फॉर। 100% यू हैव टू गो फॉर इट, 100% आपको जाना चाहिए। प्ले योर एब्सोल्यूट बेस्ट टीम जो भी अवेलेबल है। और सिटी फैंस, मैंने चेक नहीं किया है, सॉरी बोला, लेकिन इंजरी न्यूज अगर पता है, आई डोंट नो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया कि नहीं, डू शेयर। अगर कोई सिटी फैंस है, डू शेयर क्या है इंजरी न्यूज। मुझे इतना पता है कि काइल वॉकर इज प्रॉबेबली आउट सीजन के लिए, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दैट इज डन, आई डोंट नो इफ स्टोन्स इज फिट ईदर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इन टर्म्स ऑफ सिटी। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट एक शॉट इन द आर्म होगा यार, दे गॉट हालैंड एज अनाउंस हो गया, तो आफ्टर दैट कम ऑन, अगर आपके फॉरवर्ड्स परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज दे नो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे दे विल बी ऑन द बेंच, दे विल परफॉर्म। और वुल्व्स, रिमेंबर चैरिटी एफसी, वी जस्ट गिव देम अ पॉइंट, तो दे आर गुड, दे आर एनीवे आई थिंक 8th, तो दे आर गुड, ऐसा नहीं कि यूरोप मिलेगा उनको। तो मैन सिटी जीत जाएगी वुल्व्स के अगेंस्ट अवे। आई एम कॉलिंग मैन सिटी टू स्कोर 3 goals, वुल्व्स 0 अवे, 3-0। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट लेट्स सी। लॉट ऑफ चैट्स आ गए यहाँ पर, देखते हैं। इफ यू टेक आर मगवायर, यार काफी चेल्सी फैंस एक्चुअली बोले भी उसके बारे में, आई डोंट नो व्हाई। नहीं भाई, नहीं चाहिए। आई नो 3 in the back हम खेलते हैं, मैं चाहूंगा इवेंचुअली वी चेंज इट टू 4 in the back। मगवायर doesn't fit for me, simply put। गाइस लाइक फॉर लकाका प्लीज, गौरव बोल रहे हैं 100 million का है भाई। थैंक यू गौरव। वेल फ्रांस वर्सेस ब्राजील, हु आर द बेस्ट अटैकर्स, आयुष पूछ रहे, इंटरेस्टिंग। मतलब आई विल गो फॉर फ्रांस भाई, जस्ट बाय फॉर्म दे हैव लाइक crazy, you know, I think Nkunku भी French if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, Nkunku भी French है, I think Karim Benzema है, Giroud है, मतलब lot of players they have, obviously you know Griezmann is there, we have Kingsley Coman, Brazil, I know मतलब you cannot say no, but again do they have enough goals in them? मेरे ख्याल से फ्रांस के पास ज्यादा goals है, that is the difference। well Haaland versus Salah हो सकता है क्या, मतलब again मतलब these are two forwards, so I don't think you can really compare of different kinds, so मतलब we cannot really compare। Marathi Cooler in the house, big up यार, shout out आपको भी, अच्छा वीडियो बना रहे हो, keep it up, keep the regularity, and yes people do check out Marathi Cooler। और भी आएंगे काफी चैट में, देख let's see। Ankit bhai, what will be a good option both for economical and for the sporting project for Barca? Well I think यार फ्रेंकी डियोंग को नहीं बेचो। I know City are going for him, मैंने खुद अपने वीडियो में बोला है, मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। फ्रैंकी डियोंग विल स्टे, वो लिंचपिन है। बुस्केट्स इज गेटिंग ओल्ड, यू नीड अ एक्सपीरियंस मिडफील्डर, यू नो, आप गावी पेड्री पर नहीं निर्भर कर सकते। तो फ्रैंकी डियोंग इज योर एक्सपीरियंस मिडफील्डर जो समझता है बारसा का सिस्टम, बारसा का डीएनए अभी। एंड बाय द वे फाइनली ही इज रियली फिटिंग इन वेल, तो यार कीप हिम एट एनी कॉस्ट, मैं तो बोलूंगा। नहीं, सिल्वा नहीं छोड़ेंगे, ही विल डेफिनेटली स्टे एट सिटी। Advice to Haaland moments and Thomas Tuchel into, I did see that कि यार मतलब if he's not coming to City then I will not advise him, exactly, that was a pun। Does not have great first touches which is absolutely necessary to fit into this City squad। मतलब अभी young है काफी, मतलब maybe he gets it, मतलब I know 21, आप compare करो लुकाकू के साथ, लुकाकू भाई when he came to Chelsea he was 28, so वो difference है। I think Haaland will do much better, और उससे better है। I would say definitely Haaland will do well, that's my call, I don't want it being a Chelsea fan, लेकिन it's just my prediction। Okay, question कुछ भी हो सकता है यार, मतलब no problem, I'll try and take all questions, let's see। but हाँ absolutely, मतलब sometimes these reporters ना जो questions करते हैं, I really feel just where I understand, like you know, totally irrelevant man, totally irrelevant। I'm like definitely you know, they need to get a life man, as in I'm like पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, they're not asking about the players who are in the match। anyway, interesting comment यहाँ पर। well lot of comments are about Haaland,
Lampard is the man for Everton because Everton fans absolutely love and back him after seeing after game celebrations. Hope he gets time and backing start. Well, Mr. Chelsea, I said Everton is actually a decent club for Lampard. Almost you can say आप बोलोगे perfect club, लेकिन है यार उनके भी fans काफी toxic है. आप देखे थे राफा बेनिटेज एरा में, आप देखे थे अगेंस्ट लिवरपूल how toxic they can get. So for me, they can turn on Lampard. तो I wouldn't say ideal है, लेकिन एवर्टन का जो हिस्ट्री नेवर बीइंग रेलेगेटेड इन द प्रीमियर लीग, लैम्पार्ड इज प्रॉब्ली इन सेफ हैंड अगर इस सीजन बचा सके. आई थिंक इज सेव्ड. Let's try and hope for that. But I didn't like that he celebrated against Chelsea. I'll have to be honest. He didn't celebrate as a player, but as a coach he did. हाँ naturally उस सिचुएशन में थे, you would expect यार obviously celebrate करेंगे, desperate situation था उनके लिए. लेकिन यार थोड़ा डबल माइंड नहीं है ये. आप सिटी के साथ जब खेल रहे हो चेल्सी के अगेंस्ट, you are not celebrating when you score a goal. And when you are manager of Everton, you are, I don't know, मतलब थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड लगा मुझे. लेकिन अगर जो नेचुरल है करो यार. आई रिस्पेक्ट लैम्पार्ड. आप देखते हो यार, लैम्पार्ड है यार भाई अपना. ओके फेयर इनफ शायद. आई गॉट दैट, थैंक यू. वेल भाई आप कितने प्यार से रैंट करते हो. भाई सोनी टीवी वाला आपका वीडियो. अरे नहीं यार, मतलब राहुल अच्छा क्या रिमाइंड किया, मैंने पूछना है आप उनको. सर्टनली उन्होंने एक्चुअली लीगल टीम से पूछा है, तो आई थिंक इट टेक सम टाइम. मुझे याद है बाबा का भी थोड़ा टाइम लगा था. होपफुली यार इस वीकेंड तक दे क्लियर इट एंड हम डाल सके. बिकॉज आई नो काफी लोग जो मुझे सोनी टीवी पर नहीं देख पाए, बिकॉज दैट आई थिंक चैनल इज ओनली अवेलेबल इन एशिया और मे बी इन अ कपल ऑफ मोर कॉन्टिनेंट्स. मे बी यूरोप में दे मिस्ड वॉचिंग मी, और काफी लोग ने मुझे डीएम किया था. तो आई एम होपिंग दैट आई एम एबल टू पुट दैट लास्ट 15 के मिनट. बट फैंटास्टिक वन, मतलब अनरियल एक्सपीरियंस. होपफुली और भी आए. या हम इसके लिए अलग करेंगे राजेश, क्योंकि काफी लंबी चर्चा होने वाली है. वी डिड कवर इन वन ऑफ द प्रीवियस स्ट्रीम्स, हमने कवर किया था ब्रीफली. हमने कवर भी किया था, लेकिन अगेन है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आज वापस से न्यूज आई है, तो वी विल बी कवरिंग इट इन डिफरेंट वीडियो और स्ट्रीम. लेकिन हाँ, सर्टनली दैट इज समथिंग दैट मैं बोलता हूँ यार, पैसा बोलता है. दैट इज व्हाट इट इज. रियलिटी बोल तो कम ऑन पीपल, लाइक लाइक्स नहीं आ रहे. क्या है लाइक्स की कंजूसी भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा. लाइक्स की कंजूसी क्यों हो रही है यार? सब्सक्रिप्शंस की कंजूसी फिर भी समझ में आ सकता है, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा इट कॉस्ट, बट इट नॉट कॉस्ट. बट अगेन सुपर चैट्स इज टोटली ऑप्शनल. लाइक्स यार, आप लोग लाइक देख रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑप्शनल नहीं, अगर आप देखते जा रहे हो. नहीं तो लाइक कर रहे हो इसलिए देख लो ना. और lot of things have happened in this week, but we are always there. मतलब अगेन फीडबैक नीचे कमेंट करिए. आई बी ओपन टू फीडबैक. डीएम करिए. आप कब से फुटबॉल फॉलो करते हो? चेल्सी को सपोर्ट करने कैसे शुरू किया, कंसिडरिंग दे वर नॉट सो गुड लाइक नाउ? ओके, सुप्रियो दास, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन. एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गो एंड चेक आउट हमारा एक सीरीज है नो योर क्रिएटर. ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट्स, सो चेक आउट प्लेलिस्ट. हमारे काफी डिफरेंट कंटेंट है. एक प्लेलिस्ट है लास्ट 20 इयर्स और टॉप 5, और दैट काइंड ऑफ आंसर्स योर क्वेश्चन. तो मैं करीबन 20 साल से वीक इन वीक आउट फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई लिटरली मीन वीक इन वीक आउट फुटबॉल. लास्ट 20 सालों से वो है, बट ऑन अ लार्जर स्केल मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 25 इयर्स से, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग इंटरनेशनल फुटबॉल, मेजर टूर्नामेंट्स उसके अलावा भी. तो हाँ, दैट इज व्हाट माय स्टोरी इज. और चेल्सी ऑफ कोर्स इट वाज एन अंडरडॉग एट द टाइम. Cup football is something that Chelsea around the 2000 mark were really doing great. Cup football एक अलग ही लेवल आती है ना, that knockout football, FA Cup and the Cup Winners Cup and what not, the Super Cup and stuff like that. तो वो एक है, मुझे एक मूव दिया, that just like, oh wow, एक like ना, Chelsea is a team that can kind of win as well. और एक underdog थी in the EPL at the time, and lot of players, Dutch players whom I follow. There were Ruud Gullit was there, Italian players जो काफी stylish थे. Zola was really good, but the fact that once I started following week in week out football, then came obviously Wayne Bridge का goal against Arsenal. We were doing well in the Champions League as well. Then I really wanted to follow them more and more, और मैं भक्त बन गया literally. और AC Milan भी follow करता हूँ, just so you know, if you kind of have watched my other streams. Mbappe and Haaland now far okay. Who's better player? अरे शाम, मुझे पता है आप मैड्रिड फैन हो, ठीक है, तो आप सुनना चाहोगे एम्बापे. बहुत डिफरेंट प्लेयर्स है दोनों, ठीक है. द फैक्ट दैट एक समय पे आप सोच रहे थे हालैंड और एम्बापे दोनों होंगे, लेकिन द फैक्ट दैट एम्बापे दोनों पोजीशन में इक्वली गुड इफ नॉट बेटर खेल सकता है. मैं अभी बोलूंगा, जस्ट पर्सनल ओपिनियन है, अगर मुझे देना आप दो पैसे, बैंक ओपन है, एम्बापे की हालैंड
I will sign Mbappe. That's just my choice. ठीक है, लेकिन हालैंड कमी है यार अच्छे सेंटर फॉरवर्ड की. He's right up there. सिटी जस्ट अनाउंस एग्जैक्टली. हमने एक्चुअली कवर किया है सादिक भाई, थैंक यू बोलने के लिए. वेल अगेन विल कम बैक टू दिस लेटर बिकॉज इट इज अ डिटेल स्ट्रीम रिक्वायर्ड फॉर दैट. आई एम सरप्राइज्ड बाय बार्सा यूनाइटेड नॉट गो फॉर Julian Alvarez एंड मैन सिटी स्मार्ट. आई थिंक मैन सिटी का स्मार्ट बिजनेस देखने को मिला है. अगेन हमने कवर किया था रिसेंट स्ट्रीम में. आई थिंक इट वाज मेनेस इन द मॉन्क एंड टैकल फ्रॉम बिहाइंड, जहां पर हमने एक 11 किया था, जस्ट 11 ऑफ प्लेयर जो फिट नहीं हुए हैं इन सिटी और लिवरपूल इन द लास्ट फ्यू इयर्स. देयर आर हार्डली एनी फ्लॉप साइनिंग्स. ट्रस्ट मी ऑन दैट. और दैट काइंड ऑफ प्रूव्स इट कि उनकी जो स्काउटिंग है इट इज इन द राइट डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग, सिंपली पुट. Okay, perfect. Thank you for subscribing and do not forget, so Supriyo Das, do subscribe to Almighty. यहाँ पर है, अरे यहाँ पर है Almighty Sports Plus. Almighty Sports Plus. वहाँ पर भी आपको बहुत कंटेंट मिलेगा फुटबॉल का प्राइमरली, राइट? Yes. सादिक भाई, you hit the nail on the head. I know, मुझे पता है, in the Chelsea fan base there are people who actually do not like Lampard, and you heard it right. You heard it right. And there is a brat in him. I agree, but I love the guy. No two ways about it. But I am saying कि there are people because of that reason. क्योंकि एक है भाई, मतलब वो opportunistic है थोड़ा. I would say. I wouldn't expect a Terry to do that. I'll be very honest about it. Again, time will tell. Do you think Pogba to PSG will be a good move? Because I think Pogba and Verratti will be a good duo. I kind of feel that nahi. I don't think it'll be a great move. Pogba is a great player. Don't get me wrong. और हो सकता है in French football, maybe in that environment he gets his best week in week out. लेकिन मुझे नहीं लगता he's a week in week out वाला player. PSG को चाहिए एक mentality वाला player. ठीक है? They need a mentality. Just like Man City in the midfield. Verratti is right there. और Verratti यार काफी बार आप बोलते हो he has a great tackle on him. लेकिन भाई he has great passes. He has superb और quick passes करता है. For me, अगर आप पॉग्बा को ला रहे हो ना, you are kind of saying that Verratti आप पीछे रहो थोड़ा, in a strange sense. वो हो सकता है. That is why I am saying that it will not be a fantastic move. मैं अभी भी बोलता हूँ, again, maybe I'm a Dutch fan इसलिए बोल रहा हूँ, Wijnaldum, Gini Wijnaldum should come to the party. यार, he I thought was a perfect signing for PSG. But again, the time will tell. Like I say, Sadio Mane linked with Barca. I think with Bayern, will Liverpool let him go and Barcelona sign? So Sadio Mane, I think strongly Bayern के साथ हुआ है comparatively to Barca links. I can see Lewandowski going to Barca and Sadio Mane going to Bayern. वो हो सकता है. मतलब again, there is a domino possible. Or other way around, who knows? Yeah, heat of the moment. Absolutely. मतलब मैं देना चाहूँगा श्रेय. I didn't mean that it was totally wrong, but I wasn't happy. वही Chelsea fan बाहर निकल जाता है मेरे से मेरे. It was my heat of the moment. So I wasn't happy. Like I wasn't happy when he scored against us. I'll be very honest about it. वो नहीं जाने वाला था Man City. But again, थोड़ा controversial हो जाएगा. Chelsea fans will start hating on me. But I love the guy, man. मतलब मैं हमेशा Lampard का रखता हूँ यार for a certain reason. And दो jersey है Lampard की. और मैं jersey collection करने वाला हूँ. That is something pending, I know. गंतव्य, thank you join करने के लिए. Yes, Mbappe in Madrid is the news. Please make a video in the new format. Yes, perfect. Okay, are you attending Champions League or FA Cup pre-match? Did they invite you? अरे भाई, thank you for even saying that. शायद thank you for saying that. अगर वो समझे मुझे लायक तो डेफिनेटली जाएंगे भाई, डेफिनेटली जाएंगे. It will be an honor. It will be an honor. अभी तक तो नहीं मिला मुझे, लेकिन hopefully in the future आप देखेंगे मुझे Chelsea टीवी पर, who knows. लेकिन hopefully we will. Someday we will. मतलब I know Karan Singh Magic big up यार. Karan Singh Magic has been there. और I know a lot of my fellow content creators भी है. मतलब RJ, shout out to RJ, he's been there. I know from IFT Pod, great channel as well. Okay, with what's happening now with Tuchel at Chelsea recently, what is the same with Lampard at Chelsea? Was it the same? Achha, I think it is similar. Again, Gabriel Agbonlahor told that for a certain reason, but again, context लेना चाहिए. टूकल के साथ बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे. लैम्पार्ड के साथ इट वाज अबाउट, यस ही वाज अ न्यू मैनेजर इन अ ट्रांसफर बैन काइंड ऑफ अ पीरियड, और हजार्ड हैड गॉन, तो वहां पर भी 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स थे. लेकिन आई थिंक टूकल यार फार मोर प्रॉब्लम्स ही हैड यार. दिस इज नथिंग, आई नो, एब्सोल्युटली नथिंग इन फ्रंट ऑफ जो टूकल के प्रॉब्लम्स है. No problem, Gantavya. Like and subscribe, guys. Yes, absolutely.
बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. I know it will be interesting to see Haaland in City and Mbappe in Madrid. I'm sure they'll both success in City and Madrid respectively. Again, I feel the same because they are very young, or they should get the right manager. और again interesting रहेगा Madrid के long term manager कौन होंगे. Again, Madrid fans, आप बोलिए, who is the long term manager for Madrid? That'll be interesting. What you will be doing, I don't know. Whoever you basically pick, pretty sure you must say that Mbappe is your future. But again, पता नहीं है आपका क्या preference रहेगा. Maybe different for me. It's really difficult. Raul may be the next Real Madrid manager down the line. Not next year, next to next year. Okay, we have smashed you big time in the mid 90s. I agree, and that is something that मैं देखा हूँ काफी सारे matches on replay I have seen. But in the mid 90s is when we started changing to basically getting the winning mentality because of people like Ruud Gullit, people like as in Gianluca Vialli, Di Matteo, Zola. मतलब वो थे यार, they had the winning mentality. वो आने शुरू हो गई थी already. And then of course, not looking back, Mourinho came after, Roman Abramovich came. And we'll be doing a lot of history episodes as well in the future. Well, bad memories. That absolutely bad memories. Haaland does not have. Okay, this one I'm seeing a lot of comment. If you are a manager of Barcelona, which player would you sign? Keeping in mind, Kessie and Christensen is already signed. 3 more signings. भाई 3 और signing चाहिए क्या बारसा को? I don't think so. I know Sadiq Bhai is in the house and probably he'll be answering that question better, being a Barca fan. Like मुझे यार Christensen, I'm not convinced. मैंने बोला है back four. I know a lot of times you don't play with the back four. With and without the ball, depending on the situation. लेकिन for me, you still need एक center back for long term. ठीक है, मुझे नहीं लगता Christensen is the answer. Araujo is great, और पीके एक और साल मिनिमम खेलेंगे at the highest level. लेकिन probably आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक और young center half में. I'm surprised we are linked with Jules Koundé. Why not Barca? यार, I'm just kind of talking about it. Why not? मतलब that will be one position. CDM यार, Busquets का replacement. I don't know. I know Kessie आ गए हैं. They will play double pivot, but I think you probably need. Barca has always had that number 6 who's played a lot of tiki taka. वो एक चाहिए यार आपको. So for me, you need. I know Gavi Pedri खेल सकते हैं वहाँ पर, but I would rather have Gavi Pedri as attacker because I am not sure Ansu Fati, and I know Barca fans might not be happy. मेरे ख्याल से उसका इंजरी जो है रिकॉर्ड बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है. I won't rely on Ansu Fati. And Depay will go. So वहाँ पर एक forward तो आना ही है. Well, let's see. 18 more to 150 likes. I see. 12 more likes. I see. Come on, people. Let's get there. As a Barca fan, it hurts to say that we funded City to buy Haaland by buying Ferran. Interesting one. लेकिन यार अगर Ferran नहीं भी लेते ना, फिर भी मेरे ख्याल से लेती यार. I think they would have sold someone else. Simply put, वो लेते यार. मतलब 60 million euros पे अवेलेबल है. क्यों नहीं लेंगे यार सिटी? चेल्सी ने नहीं लिया because we didn't have an owner. Otherwise, we also would have gone for it. Trust me, we would have also triggered that clause. Who knows? Last season we were really close to getting Haaland. Well, लेगा भाई लेगा. सब्र करिए, अभी तो ट्रांसफर विंडो शुरू भी नहीं हुआ है. He is still playing football. ठीक है, होगा, टेंशन मत लो. I think I have a feeling इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते तक होना चाहिए. Well, अंकित भैया, who could be kind? नितेश भाई, I think you have again missed that video जो मैंने किया है. Check out on Almighty Sports Plus. मैं वापस खुद ही नाम भूल जा रहा हूँ. Almighty Sports Plus पर मैंने एक्चुअली किया है जो स्टार्टिंग 11 होगी सिटी की और जो बैकअप होगा, तो उसमें बैकअप में आई हैव क्लियरली सेड कि एक राइट बैक चाहिए सिटी को एक राइट बैक चाहिए जो सेंटर बैक भी खेल सके. और आई नो पाउ टॉरेस लिंक हुए हैं, बट यार आपने लपोर्ट को लिया है. आप हर एक सीजन आप लपोर्ट काइंड ऑफ प्लेयर को नहीं ले सकते, वो अनफेयर रहेगा. तो यू नीड अ राइट साइडेड सेंटर हाफ, समवन लाइक अ जॉन स्टोन्स. अब वो कौन आएगा पता नहीं. द बैकअप, दैट इज द मेन क्वेश्चन. For me, Cancelo can play right back as well. Fernandinho का interesting रहेगा if he stays or not. I think he's probably leaving. इसलिए मैं बोल रहा हूँ they probably need a player. Again, आप comment करिए यार. अगर you like a center half who can also play right back, बोलिए. There are players out there, but again, as a backup, I'm not sure many players agree होंगे, even though it's City. Well, Wijnaldum Liverpool से PSG गया और गायब हो गया, वापस आएगा शायद प्रीमियर लीग को वो. देखते, एक सीजन ही हुआ है. आई नो डिपाई का भी एक सीजन हुआ है बारसा में. बारसा काइंड ऑफ पुटिंग देम ऑन द ट्रांसफर मार्केट, लेकिन वो एक फॉरवर्ड है. एज अ मिडफील्डर आपको ज्यादा समय मिल सकता है.
तो दैट्स व्हाट आई वुड से वैनाल्डम को मिलना चाहिए यार एक और सीजन, स्पेशली अगर एम्बापे सेल होता है ना। और बाय द वे मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट्स देखा था अबाउट आई थिंक Bellingham, I missed that comment. Dortmund, now that fact that they have sold Haaland, Bellingham is their pin-up boy. तो वो नहीं सेल करने वाले, बेलिंगम रहेगा, काफी यंग है अभी, तो मे बी इन फ्यूचर लिवरपूल, चेल्सी some टीम लेगी. Let's see who takes it. I wish we could get Verratti. We so desperately need a good midfielder. Absolutely, he can do literally everything. But just Vila, I have to put a caveat. Verratti is very injury prone. Do we need such an injury prone midfielder after what has happened with Kante? I'll keep Kante, so I don't think we can have another injury prone midfielder there. You know what I mean? Barkley. I'm actually using Barkley, Kante, and Verratti in the same sentence. You heard it there. Barkley's hardly played is what my point was. But the idea is like हमें चाहिए यार options चाहिए. So that is why Verratti, as much as he's good, I don't think he's going to be fit. Premier League में काफी injuries होने वाले हैं. You know, again, I hope not, but just saying it out there. Chelsea saved the Legends' job. जानबूझ के नहीं शुभादीप, but yeah, thanks for joining. Will Liverpool spell Aston Villa tonight? हमने बात किया है काफी with Uday, with a Liverpool fan in the house. So do check out beginning of the stream. We have done a lot of Liverpool talk वहाँ पर, तो लोग मारेंगे मुझे पकड़ के, और लिवरपूल का बातें करने के लिए, ट्रांसफर्स के लिए बात करते हैं definitely. Big up to David, bro. I already gave you a shout out and check out people. हमने किया है अच्छा वीडियो वहाँ पर, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है. So do check them out. As I said, let's get to 150 likes right now यार दबा दीजिए सब अगर नहीं किया आपने, और subscribe to both the channels and our panel as well. Well, what if? There's always a what if, David. As an opposition, you would hope that, but again, as a football fan, आप चाहोगे नहीं. Let's see good football. Let's hope that Chelsea becomes stronger as well. Hi to 8744. Shout out to him and his channel as well for sure. Nkunku to Bayern Munich. Cham. Thank you आने के लिए. Quite लग रहा है कि Bayern Munich को चाहिए एक फॉरवर्ड, क्योंकि लेवेंडोव्स्की as time goes by मुझे लग रहा है, गट फीलिंग आ रही कि वो निकलने वाले हैं. Muller might be a center forward going forward. तो मुझे लगता है with Gnabry, Coman not being so good towards the end of the season, and of course Sane है, but you still need एक और player चाहिए. तो Musiala खेले हैं, very good player, but I think he's more like he's a Goretzka, attacking Goretzka, you know, who's very young and who's not so well built, of course. लेकिन I think he's not so suited in the front three. Front three में you need one player. So I have called Bayern Munich champ की Sadio Mane. Controversial? Why not? लेकिन Nkunku Chelsea भाई please आ जाइए. I know we are cursed for strikers and he's not a core striker, लेकिन he is one who scores goals from the wing. That is exactly what we need. Please Nkunku come to Chelsea. Very strongly linked to Chelsea and Manchester United. हमने cover किया था briefly in that transfer video that we did on this channel. Do check it out. Sanjay, thank you. Madrid signed Rudiger. Thanks for reminding me. Forza Barca. Welcome to the stream. Forza Barca bhi acha channel hai, by the way. Shout out. Sadio Mane to Bayern Munich. Yes, like I said, it happens. Will it cost Liverpool? Absolutely, it will cost Liverpool. Lekin yaar, Luis Diaz has convinced he can start games for fun. Jota has convinced me that he is a proper finisher. Firmino, he will stay there. He has been there, linchpin. Or Salah, of course, will extend, I feel. So I think they're good. और लिवरपूल स्काउटिंग, दे हैव हावी जो खेल सकते हैं, ऑक्सलेड चैम्बरलेन जो खेल सकते हैं इन द विंग, सो दे हैव अ लॉट ऑफ कवर मेरे लिए. भाई जोविच का रिप्लेस रियल मैड्रिड मैन, मतलब कितने ही तो लोगे आप, कितने ही तो लोगे. एम्बापे आ जाएगा आपके पास, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना आ जाएगा. मुझे लग रहा है 99% हो गया वो. ओके, आई थिंक लुइस एनरिके कैन बी द लुइस एनरिके. ओके, manager of Real Madrid from 2023, as Pep Guardiola contract will come to an end and he expressed his interest to coach Spain national team. Pep will replace Luis Enrique. Okay, an interesting Minu Sanjay. Thanks for sharing that. This transfer market major decision will be taken for Chelsea. Okay, Shrey, aap boliye. And again, people, I know a lot of questions there. Lekin which are the players that you would take? Which are the players you would drop? यार अगेन हमें एक प्रॉपर स्ट्रीम करना है, जस्ट फॉर एवरी क्लब हम करेंगे. हाँ, I know right now we are talking about transfer stories, major kind of signings जो हुए, breaking news in terms of Haaland, but Chelsea, as I said, again I would like to say Sony TV पे,
I said that center half is the main position क्योंकि the fact that Rudiger indispensable थे, for me center half is the main position. Like I said, Guardiola, if Tuchel is backing him, take him. But my preference is Pau Torres, someone at left center back, primary position जो हमें करनी चाहिए. We have Levi Colwill, we have Chalobah, we have Thiago Silva. हमें definitely we are having a lot of options. Azpilicueta, I still feel रहेंगे Chelsea Football Club में as an option, not as a starter. तो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, लेकिन अगेन लेफ्ट सेंटर बैक में वी डोंट हैव अ नेचुरल, तो वहां पर इट्स द मेन री एक्सपोज. और एक विंगर यार, क्रिस्टोफर एंकुकू, जैसे मैंने बोला. डीएम, हाँ डीएम भी लेना चाहूंगा जस्ट एज अ चेल्सी फैन, बिकॉज मैं चाहूंगा कि वी चेंज अ फॉर्मेशन. सो एज मच एज आई नो गैलेगर इज कमिंग, बट एक प्रॉपर डीएम, ही इज नॉट अ डीएम प्योरली, तो प्रॉपर डीएम लेना चाहूंगा. चौमनी नहीं आने वाले, एज मच एज आई लव इट. इंटरेस्टिंग रहेगा whom we go for. Certainly Edson Alvarez to United लग रहा है, तो देखते हैं. मतलब I would not mind that, to be really honest about it. Left back, right back, CDM for long term. Poor choices. Okay, left back I think is more of a backup. तो story है by the way for everyone out there. There is a transfer story. Sosa, I think मैंने सादिक भाई ने बात किया था in the last transfer stream we did. Sosa ने actually जो we had actually followed Sosa from Stuttgart. He is a good left back option. प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, यार जो भी हम इंटरेस्टेड होते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्ट हो जाती है. आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आल्सो इंटरेस्टेड इन सोसा फॉर व्हाटएवर रीजन आप बोलोगे, बट आई फील कि सोसा माइट गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज एट चेल्सी आपको पता है यू विल नॉट स्टार्ट. हाँ पता नहीं है, लेकिन बेन चिलवेल, चलो टच वुड ही कम्स बैक स्ट्रांग, ठीक है. बेन चिलवेल शुरू करेंगे अगर वो फिट है. Okay, 6 more likes, looks like it. अरे यार अभी तक चाहिए. Come on guys, let's get to 175 likes people. 175 likes is what the target is, and we'll end the stream before that for sure. लेकिन 175 likes करते हैं. We can all agree that Ajax, Barca, Dortmund are the best young talent producing academies. भाई चेल्सी भी जोड़ दो वहां पर प्लीज, मैन सिटी भी जोड़ दो, क्योंकि academies हमारे नेक्स्ट लेवल है. It is just the fact that वो लोन पर है तो दिखते नहीं है, लेकिन the fact that in recent years it has been even Chelsea and Man City academy. हमारी स्काउटिंग बहुत अच्छी है in the academy and same goes for Man City. मैं बोलूंगा तो यार ये 5 I would agree. Certainly nice call there, absolutely. ये नहीं होने वाला for me. Again just gut feeling है मेरी, nothing else. Pjanic, भाई फीफा खेल रहे हो क्या अभी तक? नहीं यार Pjanic नहीं. He's not done यार, क्या कर लिया उन्होंने टर्की में, क्या उखाड़ लिया है, कुछ नहीं किया है. ये मेरे ख्याल से प्रॉपर पन है, लॉन्गले घूमती थी. Just kidding. I saw the second part later on. कोई नहीं. Yes, hi to you as well. Love from Nepal. Love to you as well. I make some football content in Nepal in Nepali language. Interesting, भाई. People check out यार. People, especially people from Nepal, Rosso football. Check out. काफी अच्छा लगा सुनकर. Mock by DW. हाँ मैंने देखा है और मुझे भी like Mock by. Lot of people have been asking. This has been pending from a long time, Rahul. Who am I? Jerseys, काफी pending है यार. मतलब again करेंगे यार. मतलब थोड़ा bandwidth का issue है, लेकिन like I said, थोड़ा सा if you guys support me a little bit more, जो आप करते आ रहे हो on both the channels, we'll probably make it like 100% full time. क्या बोलते हो? मतलब we'll definitely get there. 290 votes but only 145 likes. 50% कर दो दोस्तों like. Come on. आप लोग सब देख रहे हो, सब लोग आए हो, देखे हो. आपने सुना उदय के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और चेक आउट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. काफी कंटेंट है वहां पर, चेक करिएगा. बहुत अच्छा वीडियो किया हुआ एक जो हाईलाइट के बारे में वहां, वो मत भूलना. भाई मेरा कमेंट भी ले लो. गौरव आप घर के ही हो, मे बी इसलिए मैं भूल गया होगा, आई डोंट नो. लेकिन गौरव क्या था आपका कमेंट, ले लेते हैं भाई. आपका कमेंट क्या था? ज्यादा स्कीम ना बताओ कुंडे, फिर बोलेंगे चेल्सी की कोई आता नहीं. यार मैं तो अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन, आई एम ओके विद कुंडे नहीं आना भी. ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, बिकॉज कुंडे इज नॉट योर वर्ल्ड बीटर जो हमें चाहिए. वी नीड अ प्रॉपर स्टार्टर, एक लीडर, एक कमांडर. मैं चाहूंगा पाउ टोरेस, डिलिक्ट, वो है मेरे प्रेफरेंस. अगर सच में मुझे दे दो, पूरा बैंक दे दो, आपके पास है और वो अवेलेबल है. पाउ टोरेस और डिलिक्ट आर द पीपल जो मैं चाहूंगा चेल्सी फुटबॉल क्लब में. दे आर योर लीडर्स. वी डोंट सी कुंडे बीइंग अ लीडर. मैं नहीं देखता हूँ. और पोटेंशियल काफी है. इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, ब्रिलियंट एट बॉल प्लेइंग, ठीक है, लेकिन ही हैज मिस्टेक्स इन हिम एंड डिएगो कार्लोस बहुत सारे पेनल्टीज दिए हैं सेविया के साथ. दैट्स व्हाट.
वेल ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ. अगेन चेक आउट हमारा प्लेलिस्ट है एक. वो प्लेलिस्ट का नाम है नो योर क्रिएटर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी. Baba is there. Baba did a very good episode. I think Usman Bhai did it. I think we had even IndieCop did. So we had Know Your Creator. काफी क्रिएटर ने बोला है अपने बारे में. मैंने पहला एपिसोड अपने बारे में बोला है. तो प्लीज डू चेक इट आउट. काफी अच्छा लगेगा. काफी इमोशनल वीडियो है. गो डू चेक इट आउट. टेकराज. How much you rate Rafinha? He's linked to Barca. हाँ, like I said, Forza Barca पहले. Rafinha is good, very good player. लेकिन is he an upgrade on Dembele? नहीं. तो मैं बोलूंगा he is probably a player जो आपको definitely help करेगा, लेकिन he is not a player जो आपको you cannot rely on him ना to basically do a role what maybe you expected a Griezmann to do. Just putting it out there. ठीक है. तो मेरे ख्याल से you still need a proper forward. Okay, let's see. Feels like third season will be good one for Werner. नहीं श्रेय, मैं नहीं जाने वाला वहां पर. पता नहीं आपने सुना है कि नहीं. मैं वर्नर, I said it. UCL last season he was great. Apart from that क्या किया है भाई, क्या किया है. 3-4 मैचेस इधर उधर, लूटन टाउन के साथ, come on, like that's not done, man. Werner, I'm not buying the Werner on form kind of third season नहीं. I'm not buying that, honestly speaking. I know Chelsea fans कुछ लोग अच्छा नहीं लगे आपको, लेकिन it's just my view. It's just my gut feel कि मुझे नहीं लगता you can rely on him week in week out. Ziyech on the other hand, I would like to, क्योंकि Ziyech brings a totally different element. He's a left footer जो ping करता है balls को. I know Werner भी is totally unique in his own way, but creating opportunities, I think Ziyech is key. Finishing opportunities what Werner was bought for, वो नहीं करता है Werner. ठीक है, तो that is the only reason. Dortmund is a feeder club for Europe. What's your opinion? 100%. Cobham kiddos are some of the best in the world. Exactly. Called it. Just Wella knows it. She knows the stuff. Love from Nepal. Sham bhi bol rahe hai. Absolutely. Ho gaya like. Thank you. The Scouts Foodie. Nice to see you. We should do a podcast for the FA Cup final. So Scouts Foodie, I am already planning like live on this Thursday. I have already a panel planned. Let's see if I'm able to get Medicine Monk, but I am also in touch with the Dugout Football channel. So Thursday, Friday, this time I've already planned, but maybe we can try and do on your channel. Do DM me, we can talk about it. अगर हमारी बैंडविड्थ है दोनों की तो हम करेंगे यार, डेफिनेटली. भाई बारसा को रीस जेम्स, रॉबर्टसन, रॉड्री, रूडिगर और मेसी दे दो भाई. और मैजिक वॉन्ड भी दे दो साथ साथ में. टेकराज थॉट तो यार भाई ये होने नहीं वाला. मतलब अगर मैं बोलूंगा, अगर न्यू फॉर्मेट ट्रांसफर टॉक हम करेंगे न्यू फॉर्मेट के हिसाब से मैं रेट कर रहा हूँ, तो माय रेटिंग फॉर दिस ट्रांसफर इज मतलब सो होगा नहीं होगा दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन अगर होगा तो माइटी ट्रांसफर होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? एज इन आई रियली वांट हिम ग्वार्डियोल, डिलिक्ट, they are probably more experienced in the higher stage. I know not fantastic world beater नहीं है. लपोर्ट वो वर्ल्ड बीटर नहीं थे. तो इट इज पार्ट ऑफ द कोचिंग सिस्टम, जो कोचिंग मैनेजमेंट है. दे हैव टू आल्सो वर्क विद द टीम, एंड वो होएगा यार. मतलब इवन रूडिगर, रिमेंबर रूडिगर वाजंट द वर्ल्ड बीटर एट रोमा. वो एक इंजरी के बाद आए थे, मेजर इंजरी के बाद. तो यू कैन से दैट वी हैव टू इन्वेस्ट, चेल्सी हैज टू इन्वेस्ट इन सर्टेन कमोडिटीज जो इतने नोन नहीं है. मतलब दैट इज द वे दैट चेल्सी हैज टू गो. करो यार, कुछ भी करो, और ब्रोहा को वापस लाओ यार स्ट्राइकर में. आप बहुत अच्छे हो भाई यार. भाई थैंक यू. हम्बलनेस कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है भाई. लव फ्रॉम नेपाल. अरे ऐसे कमेंट्स मेक माय डे एंड दैट मोटिवेट्स मी. सिंपली पुट, व्हाटएवर रिपीट. जस्ट वाइला आई डाउट दिस विल हैपन नाउ, because I think Fabrizio Romano has told about Adeyemi. So Adeyemi is a player. Again, if you have followed Adeyemi, he is not your player who's going to play in the central striker position all the time. Okay, he is your floating forward. He is someone who can play wide. So जो Werner से expect कर रहा था, I think Adeyemi they can probably get more output of, because I think of the fact that he is younger. तो मेरे ख्याल से Dortmund, the way they have gone, Werner maybe they will not get a sell on after a few years. So इसलिए I think they might go for Adeyemi. Again, I might be wrong, or maybe they might go for both, but I feel that they might go for Adeyemi. Yes, like Lida or we already said. Absolutely. Thank you for saying that. Big fan bhai aapka from Pakistan, Hasib Rahman. Thank you, fan of you as well. Messi ये कभी नहीं होने वाला, simply put, right? 1 or 2 of yes. जैसे मैंने बोला है उस वीडियो में भी, नितेश जिसकी बात कर रहा था मैं, clearly 1 or 2 will go.
I will say that इस सीजन तो गैब्रियल जेसुस रहेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज डन रियली वेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन और द फैक्ट दैट वो विंगर भी खेल सकते हैं, स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं और काफी स्ट्रांगली लिंक हुए हैं स्टर्लिंग टू एसी मिलान. नाउ एसी मिलान, वन ऑफ माय क्लब्स, Rafael Leao, he has been strongly linked to City. I don't know about that one, लेकिन Sterling to Milan हो सकता है. Remember, Milan and Italy में generally English men are going आजकल. ठीक है, Tammy Abraham is there in Italy. You have Tomori in Italy. ठीक है, तो there are people Smalling मत बोलो. तो there are English players out there, लेकिन he is starting for England at times. तो he might say no. That might be the only thing. Marcus Alonso to Barcelona. Well, I have actually said it looks mighty. It looks mighty मेरे लिए because of the fact, yeah, I know back four खेलती and all that, लेकिन वो Spanish है काफी दिनों से. I think this is not a secret that he is going to leave Chelsea Football Club eventually. और अभी जो stories है with Tuchel, Rift and all that, और एस्पिलिक्वेटा का आई थिंक ट्रिगर हो गया है. ही प्रॉब्ली एक्सटेंड इज व्हाट आई एम होपिंग, नॉट एज अ स्टार्टर बट एटलीस्ट इन स्क्वाड. तो यार अलोंसो तो जाएंगे मुझे लगता है. और बारसा इज वन ऑफ द क्लब्स व्हिच आर टारगेटिंग अलोंसो फॉर व्हाटएवर रीजन. तो व्हाई नॉट, बट ग्रेट फिट नहीं है. जस्ट लाइक क्रिस्टियनसन, आई डोंट सी इज अ ग्रेट फिट. इट्स वेरी मच ऑन भाई. मतलब ये वाला मैं बोलूंगा माइटी इज व्हाट आई एम कॉलिंग बिकॉज बहुत दिनों से चल रहा है. आई नो सेविया से बिजनेस करना इजी नहीं है. सेविया है, नापोली है, स्पर्स है. भाई बिजनेस मत करिए चेल्सी फुटबॉल क्लब. लेकिन अगेन कुंडे का काफी दिनों से चल रहा है. ही वांट्स टू कम, कर दो भाई. एज सून एज न्यू ओनर आएगा, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज आई बिलीव. ठीक है, या हालैंड का है, लेकिन चलो ही स्टिल यंग यार. देखते हैं सिटी का मेडिकल टीम क्या करती है. क्लॉप वाज रॉन्ग. आई फॉरगॉट टू आस्क उदय दिस. आई वांटेड टू आस्क हिज ओपिनियन. नीनो सब्जेक्ट, ग्रेट पॉइंट. आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक भाई. He said, again, for people who missed it, Klopp ने बोला है कि यार Tottenham play a certain way. They played a certain way उस गेम में. 1-1 हुआ था. भाई, he said he has a personal problem. He doesn't like that kind of football. But he said it himself. वो उसका personal problem है. So I don't think there's anything wrong in that. But previously he's also gone on record saying that, that is anti-football and things like that. भाई, I don't agree with that. That is part of football. अगर Spurs खेलती taking the game to Liverpool, they would have lost. So it's good for Spurs. They have a chance अभी top 4 के लिए, right? And by the way, हम जुड़ेंगे कल भी यार, and we'll either be live or we'll do a video as well tomorrow night. This will be for the North London derby. आप सोच रहे होगे यार North London derby भी है, बात क्यों नहीं करा? That is on Thursday night. So we'll be talking about North London derby. We'll be talking about FA Cup. A lot of talks अभी बाकी है week में. So we'll come to that. I hope Leao stays at Milan. Well, I do so as well. Most improved people out there. Comment करिए, who is the most improved player in Europe in the last 12 months for you? Rafael Leao. अरे यहाँ है. Rafael Leao. He is a shout उस question के लिए. Who is the most improved player? He is one of them. Tonali, brilliant man. मतलब I think Rafael Leao, he has to stay man. मतलब again, if Sterling replaces him, I'll not be like really unhappy. लेकिन Rafael Leao brings that strength element which Sterling will not. Yeah, best. Absolutely, he can be. He has. और देखा यार हमने for Portugal, what an impact he had in that important game. So he will have an impact. I think he's part of the World Cup as well. Absolutely. Mazraoui थे, लेकिन I believe वो Bayern जाने वाले. From what it seems like, Alonso is strongly linked. Aspilicueta I don't see अभी होने वाला है. After what happened with Chelsea, I think one person will probably stay back. And that be Aspilicueta Chelsea. और इंटरेस्टिंग रहेगा who is that full back जो जाएंगे यार बारसा. For me, right back, I don't know यार. I'm not pretty convinced with your right back option. I know Dest is still young, लेकिन मैं convinced नहीं हूँ. I agree that you need options there. Young, good goalkeeper in your scouting list. Again, मतलब I don't know about young, and I don't know about scouting. Maybe I'm biased. Have you all seen Mannion for Milan? I know he just मतलब joined Milan एक साल पहले. भाई, what a season! Arguably, and I'm saying it real, arguably one of the best goalkeepers in Europe. Mannion has been next level. And I hope I don't jinx it. अभी भी मिलान के बाकी यार, they have to win Serie A. भाई आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो आई बटन पे रख सकते हो क्या प्लीज? ये समझा नहीं मैं यार. टेकराज आई डिडंट
ओके ओके इंट्रोडक्शन का ओके गॉट इट तो बेसिकली मेरे होम पेज पे आई पुट माय इंट्रोडक्शन की वीडियो व्हाई नॉट टेक राज आई पुट इट आई सर्टनली पुट इट बाय द वे सिंपल भी है प्लेलिस्ट में जाओ आप प्लेलिस्ट देखो बहुत सारे प्लेलिस्ट है नो लेकिन नो योर क्रिएटर इज द प्लेलिस्ट इज व्हाट आई एम टॉकिंग उसमें पहला वीडियो मिलेगा लेकिन आई पुट इट एज वेल Klopp is now pulling his rival's leg. It's part of the gamesmanship as we say, right? Can you name some Busquets replacement? I think Sadiq bhai ने काफी बात किया है for Barca. We have discussed in detail about them in previous streams. Like for like replacement almost है ही नहीं. Rodri नहीं जाने वाला. ठीक है, Rodri नहीं जाने वाला. वो hardly है. आप बोल सकते हो that maybe why not get I don't know, like maybe the Milan central midfielder यार मैं खुद मिलान का भूल रहा हूँ कौन है मैं मिलान का CDM यार he is the guy मैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार-बार लेकिन अपना जो है ना he is someone that मैं जाना चाहूँगा if I was a Barca fan obviously मैं बोलूँगा नहीं as a AC Milan supporter लेकिन Milan they definitely have decent kind of players in that position again Kessie is one जो उन्होंने वापस already ले लिया है but at the same time you have Brozovic that kind of player थोड़ा अलग है totally I know but Brozovic can do a lot of things तो काफी options है like for like replacement तो नहीं है काफी again बहुत hardly नहीं मिलेंगे ऐसे kind of players and that is why Busquets is special man Kamara and Chouameni well Chouameni maybe यार Kamara I don't think so मतलब nowhere close to Busquets to me मतलब very very different player लेकिन very high ceiling there I agree good player AD but Chouameni yes Chouameni नहीं जाने वाला यार Barca I'll be honest about it I can see him going to Liverpool or Real the way things are going Maguire to Chelsea नहीं यार we know Sandro Tonali मैं नाम नहीं लिया इसलिए Sandro Tonali नहीं लिया नाम क्योंकि मैं चाहूंगा नहीं Sandro Tonali जाए absolutely अरे नहीं यार मैं बोलता हूँ कौन था यार मैं भूल रहा हूँ ये कौन है इज इट अरे मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ कौन है लेकिन दे हैव बेसिकली अ यंग गाय जो है वेरी 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 क्लोज टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्युटली दे हैव वन यंग गाय और बार्सा के एकेडमी यार ला मासिया में सर्टेनली देयर विल बी समवन Martin Zubimendi. I think this is probably the guy that we are talking about. Let me actually. He's a Spanish footballer though. He is a midfielder for Real Sociedad. Yeah, he is pretty decent. You can say that he's done a good season. So not a bad shot exactly. But young players who are getting that mold are probably a better investment rather than players who've been there for very very long, right? नहीं यार ये मैं बात कर लिया डायरेक्ट स्वैप तो नहीं देख रहा हूँ लेकिन लेवेंडोव्स्की अगर छोड़े तो why not and I can see माने जो स्ट्राइकर जैसे खेले हैं he can be an addition definitely hit the like button everyone it is 2 hours and we are almost through this entire stream we have covered a lot of football here we have covered transfers हमने कवर किया Aston Villa Liverpool के predictions and getting your predictions people जो late है Aston Villa Liverpool Leeds Chelsea Leicester Norwich Leicester fans I know Rene was waiting Leicester come on Norwich have already relegated Leicester will win. They should win because I don't want them turning up against Chelsea only. Leicester will win. I think I'll go with a 3-1 to Leicester. Watford Everton. I've already predicted that. Wolves Man City. That also I've predicted. And North London Derby will come to. I know that there is a Barca match as well. Lekin inconsequential है almost. Let's be honest. Barca is secured top 4. Champions League के लिए मुबारक. और काफी क्वेश्चन स्टार भी हुए थे मैंने पता है नहीं लिया शुरू में और मैंने बताया कि मैन यूनाइटेड को कैसा प्लेयर चाहिए आई थिंक एडसन एल्वारेज दैट वाज माय कॉल हजार्ड टू न्यूकासल और मे बी डॉर्टमुंड और इंटर ठीक है तो इंटर का आई थिंक दे हैव पेरिसिच मुझे नहीं लगता हजार्ड विल फिट लोटारो मार्टिनेज मुझे नहीं लगता ही गो टू आर्सेनल तो दैट इज द रीजन और आई नो मैन सिटी के साथ भी लिंक हुए हैं सिटी हब बोल रहे हैं तो इसलिए मे बी दैट्स व्हाई इज आस्किंग लोटारो मार्टिनेज मैन सिटी मैं नहीं देखता यार ऑनेस्टली मैं बोलता हूं तो आई थिंक हजार्ड टू Dortmund, why not? Why not, man? Go for Hazard rather than Werner. मैं भी बोलूँगा Dortmund. Listen to this. Okay, absolutely. This one Sadiq bhai has seconded. I have seconded Coutinho to Newcastle. Coutinho, I think they are trying Aston Villa to keep him. Chelsea need proper winger. Yes, who scores goals. What should we do now? Haaland didn't come to Barca. Anonymous memer, I have said maybe go for Lewandowski. I have a feeling he'll move. That's just my gut. Leva can come to Barca. Meebird, exactly. He has already said it, right? James Ward-Prowse is a surprise midfield target for City. Oh, interesting.
और मेरा जो वीडियो था ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, वहां पर मुझे ये भी रियलाइज हुआ, सिटी एक्चुअली नीड अ मिडफील्डर. आई कैन सी व्हाई दे आर लिंक्ड विद पॉगबा, because I think Grealish will play more like a forward if say Sterling leaves or say Jesus leaves, right? So I can see definitely City को चाहिए midfielder, but again Foden can also fit in there. Uh, James or Prowess, yeah, he should start at clubs. He's actually underrated. I don't see that happening. मतलब वो weak बोलूँगा, weak. Football creeks. Yes, what of City? This was just a prediction kind of thing. And और centre backs मैंने काफी बात कर लिया, Matt. I hope you've already got that. Delict and Pau Torres is what I spoke about. And I've already spoken about Barca as well. Hopefully we have answered all your questions. And these are already things that we've discussed. So again, people, like कर दीजिए. 2 घंटे का stream है. I was hoping we will get to at least 200 likes. Come on. मतलब this is not done before ending the stream. Everyone, even a single person, अगर आपने like नहीं किया, let's like the stream. All मतलब it will certainly help me. It will certainly help you because मैं motivate होऊंगा और content के साथ आने के लिए, और अच्छा content भी. अगर कुछ भी feedback है दीजिए. We are working on a lot of things slowly but steadily on both our channels. So do check out our channels. नीचे आप देख ही रहे हो. But not just that, like take that poll and let me see poll का क्या हो रहा है. Poll का क्या हो रहा है यार. हसीब, drink water will leave. फ्री में लीव हो जाओ. कहाँ लीव होंगे I don't know. I think the most impact जो होगा in terms of जो predicted transfers है, काफी लोगों ने वोट किया है हालैंड टू सिटी. तो यू आर लुकिंग लाइक Haaland to City will have more effect than Mbappe to Real. बहुत ही interesting. I know Real में you have Benzema already. Is that the reason? मैं surprised हूँ. मैं सोच रहा था Mbappe to Real will probably have more effect. But again, I might be wrong. Maybe Haaland news में ज़्यादा compared to Mbappe आज. That's one of the reasons. I don't know. आप लोग बोलिए what was the reason? Let's like the stream. Let's like the stream. यार कंजूसी नहीं. Like I'm hoping, I'm pretty assuming everyone is like. बीच में जो आए थे वो लोग like नहीं किए होंगे. But by chance नहीं किया यार. Like कर दो, subscribe कर दो to all our channels. आप नीचे देख ही रहे हो. नीचे लाइन से जाते रहता है. यार Forza Barca, we will start World Cup content very soon. World Cup content. Who am I? We will come back with top 5 last 20 years. और नए सीरीज भी will see pretty much gaming and stuff like that अगर bandwidth रहे. So आप देखेंगे काफी content. लेकिन definitely यार towards the end of May, once basically Champions League gets over, transfer window शुरू हो गया, तो you will see a lot of content. So we will come there. We will hopefully cover there. Too early right now. Well, देखते हैं यार. Todd Burley, I know पनौती है. लेकिन if I'm not wrong, women's का he was there, right? Women's team, and we won the WSL for the third time successively. Correct me if I'm wrong, Chelsea fans. But yes, let's all hit the like button, and thank you Just While. Always helps when I get the support of you people. Yeah, ये वाला करना है. ये भी एक है. और जो भी मैं बोला ना, इतने सारे पेंडिंग है, ये भी एक वीडियो पेंडिंग है. मोग भाई से इंस्पिरेशन लेकर करते हैं certainly. लेकिन कल we will be back, like I said, either with a live stream or with a video or both. So do press that bell notification icon B on both our channels, Almighty Sports Plus, Almighty Blues FC. दोनों channels पे check करिए. और shout out है certainly to everyone, each and everyone who joined the stream. काफी लंबा stream, we discussed so much. Predictions, get in all your predictions. आज रात के लिए what will happen कल रात के लिए, and we'll be back with a lot London Derby as well as the big one, FA Cup final and whatnot. Absolutely. Till next time, take care. And again, Chelsea, get ready, man. Get ready. It's Leeds. But wish you all the best, Liverpool fans. And congratulations to City fans and Barca fans. Big match, I know. All the best. Bye.